cards. Hello and welcome to an all-important encounter just like any other. 23rd match of the Kingdom Valley National T20. Central versus Southern. Both are from Punjab. Teams have arrived and have had a good outing, Central Punjab, last time around. And they started probably believing in themselves that they can get those wins going. If they can end up with 10 points if they win all the remaining games. Southern Punjab had a, weather-affected game. They still need that momentum to carry on. They are slightly better than their counterpart, Central Punjab. Let's have a look at the points table. We'll get a clearer picture as we are getting closer and closer to the semi-final stage. 7 matches for most teams. Some of them have played 8. But the two teams encounter today are ATF Southern Punjab versus Central Punjab, bottom of the table. Both of them 7 matches apiece, but the points are the difference. So if today Central wins, they can catch up and probably with a better run rate get to number 5. Look at these two teams, Ali, and you just cannot differentiate which one to pick. But you can say momentum probably is with Central Punjab after that big win against KP, the big side. Yes, absolutely. I think there's nothing to pick. They're very similar sides, both of them. But the last game that Central Punjab played and they won, I think that would have given a lot of confidence to Central Punjab. And we know Southern Punjab, they're playing well. They're a young side. They've got some X factors in the side, so we're expecting a good game. What does the Multan Square have to offer? You can get a little idea of that from yesterday's game. Sindh completely, demolished the opposition by winning it by 9 wickets. And the man, or you can say the destroyer-in-chief, was none other than Sharjeel Khan. I mean, he scored 80% of the runs for the side. You need 159 to win. He scored 107. Absolutely, and this surface suited his kind of play, the way he plays. And he likes ball coming onto the bat. He likes playing square of the wicket. And the way he played, he was supported by some poor fielding from Balochistan, but that's not his problem. He was given the opportunity and he capitalized on it. You know, when you talk about street cricket and you say there's no leg before in street cricket, felt like yesterday the catch out is not out. And probably that was the problem with Balochistan, why they lost the game. They gave him 3 chances and it's not his fault if somebody doesn't want to catch it. He capitalized and cashed out on it. Definitely. I think all the credit must be given to Sharjeel Khan, the way he capitalized on it, the way he played his shots. I think that was amazing. He's announced that he's still got it in himself and he's still ready for international cricket. All right. Let's focus a little bit on ATF Southern Punjab, how they've been performing. Now, I've always used this word, flashes of brilliance. You see them performing in pockets, but this consistency is missing somewhere. It could be the batting order that they want. It hasn't really worked. The captain is not amongst runs. He's more of a off-spinner these days, and he's doing well with that, by the way. But Zain Abbas is one key for them. If he performs up in the order, that's when ATF Southern Punjab starts feeling that they are in a match, in a game. So we keep, as I speak, I'd like to see what Zain Abbas has to offer to ATF Southern Punjab and how he actually balances the missing links in their batting. If he performs, if he goes good, then they're on their way. These are his numbers. Yeah, the impressive part is the strike rate. I know he scored runs, 262, average is very good. But the impressive thing is that strike rate we talk about in T20 cricket, and he has done very well. I think he's been the top batter for Southern Punjab. And since the time that Umar Siddique has joined him, I think that will give a lot of confidence to him, right? Just like Faizan with Tayyib Tahir. It's similar side that I said, both of them scoring for them and both of them scoring for Central Punjab. So I think there's nothing to choose really between the two sides. Most of the sides here haven't really won games chasing totals. I mean, it was a one-off thing yesterday where Sharjeel got 100. Now, if you look at first and second innings, oh, it's gone before we could talk about it. People are in a hurry. What's wrong, guys? All right. So, we talk about first inning and second inning performances of Zain Abbas. If we can see that again, it will be amazing. That what's the difference and how the pressure is actually absorbed by a good player. And if you can do that, then it actually helps you out. And now you see that 160 batting first, 102 batting second. These are the numbers. But it's always a little difficult when you are chasing the scoreboard, when you're chasing a required run rate. Absolutely. I think the thing that you need to look is the strike rate in second innings. I think that is 164, and we all know that chasing, there's always pressure on you, and he has done that very well. Well, just one dismissal and 164, the strike rate is pretty amazing.
It's also to do with what the captain wants when they win the toss. If they haven't really chased in this tournament, they've opted to bat first or they've been asked to bat first. Let's go on and join our pitch report. And we've got Marina Iqbal tell us more about it. It's bright and hot. Multan is living up to its reputation. Right now the temperature is 35 degrees and 55% of humidity. The temperatures might go down as the day progresses. Right, this surface now, again a brand new one. The dimensions are 72 all around the ground. Some cracks on the surface, as you can see. Live grass is also there, so the pacers might have an early say. They will get good bounce on it, some seam positions. Spinners will have a say. Batters, you will need to be patient because you will get reward for your stroke play. Just allow the ball to come near you and then play. It's going to be a good game. I feel that bowlers will have their say and the batters can dominate if they can apply themselves better. Overall, it's a good track. For me, ball first, chase the target down and field well. That's really important. Yeah, I know it's nothing to do with the pitch, but you've got to field well in any format. And this one, it can just really eat you alive if you're not good in the field. But this is a strip again. I think it offers that extra bit of bounce that we saw yesterday and something for bowlers as well. But runs will be around. Absolutely. I think credit has to be given to the groundsman. The way they have prepared these pitches, not just here, but Rawalpindi, since the time we have seen excellent games, very competitive games. And as Marina said, if you are patient and stay on the pitch, you will get a lot of runs. And that is so true. Okay, what do the captain want to do at the toss? Let's join Shah Faisal. This Kingdom Valley National T20 Cup is moving towards the business end, and each and every game is vitally important. This one is coming between Central Punjab and ATF Southern Punjab. I've got the two skippers here, Qasim Akram, Salman Ali Agha, and Mr. Iqbal Sheikh is the match referee. Qasim has got the coin. It's tails. Qasim has won the toss. Qasim क्या करेंगे? जी बॉलिंग करेंगे. और विकेट पे आपने देख रहे हैं मैचेस हो रहे हैं, ये विकेट कैसा लग रहा है? जी जैसे मैचेस हो रहे हैं, फास्ट बॉलर को काफ़ी हेल्प मिल रही है, काफ़ी राइज हो रहा है बॉल, सो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि बॉलिंग करेंगे. और टूर्नामेंट सब टीमों के लिए वाइड ओपन है. क्या बात हुई कैंप में इस बारे में? जी बिल्कुल ऐसा ही है. यही बात हुई है कि एक पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में. और टीम न्यूज़? सेम टीम. Same team. चलें कासिम, have a good game. Good luck. Thank you. सलमान, इस विकेट पे आप क्या करते हैं अगर टॉस जीतते? हम भी बॉलिंग ही करते हैं पहले. और ये हर विकेट डिफरेंट चैलेंज एक तरह से दे रही है डिफरेंट टीम्स को. ये एक अच्छा है आपकी स्किल्स एनहांसमेंट के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ा लग रहा है पिंडी से ज़्यादा बाउंस यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन ये है कि एज ए प्रोफेशनल हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है, तो कोशिश करेंगे एडजस्ट करें. सही. और क्या समझते हैं अच्छा स्कोर क्या होगा इस पिच? आई थिंक अगर 160 to 170 के बीच में रहेंगे तो वो अच्छा टोटल होगा यहाँ पे. और टीम न्यूज़? सेम टीम. Same team. Chale, have a good one. Good luck. So the news from the center is that Central Punjab has won the toss and they have elected to have a ball first. Just love watching Shah Faisal, you know, he looks so fresh. Wish I could do that. Let's have a look at the two teams. And of course, there are no changes from both sides, but the key players that we've spoken about, Zain Abbas from ATF Southern Punjab, Umar Siddique was looking good last time around. Salman needs to get runs. Sharoon is a good talent. You were talking about Yusuf Babar. Yes, I think this is his second game that he's been involved in the Southern Punjab side, and I think he's given a lot of balance to this side. But then Southern Punjab, I think they're a very good bowling side that gives them that edge, having Ali Majid Shah, Mohammad Ilyas and Samin Gul in the side, which is missing in that central link in my opinion. Although Hunain Shah has come in, Waqas Maqsood, they have strengthened their bowling lineup, but still that X factor is missing in central bowling. That will give a little bit of edge to ATF Southern Punjab. Well, I'd like to see Akhlaq getting runs. He's been given the opportunity and he's opening the innings. He needs to go out there and support Faizan, and then Tayyib Tahir gets that platform that they require. Okay, so here we are. What's your prediction? I think I will go with Central Punjab because they need a win and they're a big side, they're chasing, they've got Shoaib Malik in it, and I have a feeling that Central Punjab will pull it off. Well, even ATF Southern Punjab needs the win. They're desperate, they need more. They need more? More wins. Okay. They both are at the bottom of the table.
Okay, so you say the Central Punjab needs it more. Now they've got more pressure, I feel personally, because they've got names in their square, in their camp as well. Shoaib Malik is there, and when you have certain names, then a certain level of responsibility increases because expectations are there. Also the reputation of all these players, you mentioned Shoaib Malik, and that's why I really want Central Punjab to stay in the tournament. It won't be nice that they're out of the tournament. If they lose this one, they're out of it. So that won't be nice for Central Punjab. They're struggling, they're in the rebuilding procedure. They've given opportunities to the youngsters, so that's why I really want them to stay in the tournament. And just for the sake of the tournament, it's good that Central Punjab stays in. ATF Southern Punjab have had their own issues, not just within the team, but also with other things which are uncontrollable. We got rain in Rawalpindi, and then you talk about sandstorm over here. I hope they bring something spicy today. And if they can do that on the field, it'll be amazing. So here we are. Time for us to take a short break. When we come back, we'll have the live action for match 23. It's ATF Southern Punjab versus Central Punjab. Enjoy.
very warm welcome to Multan. It's a steamy hot afternoon. Mohammad Akhlaq has been given another opportunity. Unchanged Central Punjab side will be looking to claim a victory here, because if they don't win here, their tournament must be over. Onan Shah is the one to look out for. In the huddle, pep talk. Very important. Like I said, the tournament is wide open. Good time to say a very warm welcome and good afternoon to the former Pakistan international alongside me in the comm box, Marina Iqbal. Good afternoon, Faisal, and good afternoon to everyone to yet another game. It's going to be a good contest between the two Punjab sides, Central and ATF, both coming in with win on their shoulder. Got the openers up, Zain Abbas and Umar Siddiq. That has been an impressive change for ATF Southern Punjab. Umar coming out right on the top had provided a lot of cushion to this batting lineup. Zain Abbas's form has really turned up the fortune for ATF Southern Punjab. Shows a brother. He's officiating. Faisal Afridi is the other on-field official. Zain Abbas is the man that Southern Punjab will be looking for a good start, because he's the form man. But this wicket will pose a completely different challenge. Got to be good with your horizontal bat strokes to succeed. 30 years of age, 1700 runs at 29, strike rate 117. No 100 for him yet. Can cash in on this form and get his first ever 100. ATF Southern Punjab will be delighted. He's a stylish batter. Doesn't get a lot of score. Strike rate can improve there, but he's key here. The opening partnership for ATF Southern Punjab. Both are aggressive in their approach, always love to go after the ball. And this surface, I think, might just aid their stroke play. They love to hang on to the back foot, play cut, short, pull. They're up against their former teammate, Amir Yamin. He'll get a bit of swing early on. Have a look at that. 4 wickets, just giving away 5 runs. That's pretty impressive for a fast bowler. He does bowl big in swingers. That means that he'll be taking the ball away from the left-handers, 2 left-handers. Just slip in regulation field on the offside. That bounce. It should be an interesting passage of play. Play was the call from Faisal Afridi. But as it always happened, pretty much always, some trouble behind the side screen at the start of the play. But I think everything's sorted now. This should be a good challenge. Don't blink, folks, because this is going to be very, very exciting with the new ball and on this very spicy pitch. I didn't mean to say that. That just died on the way. There's a few cracks there, but Amir just floated it. Just a loosener, I guess.
shape right away from Amir Yamin. He'll get that and will get some assistance off the surface. Plenty of cracks, some live grass there. The seamer will try to exploit that. Early nerves. They need to get rid of it, the batters. Amir Yamin was never expressed this season. Watching him, looks like he's just lost a yard of pace, but he's experienced, so he knows how to bowl with the new ball. He's been very prolific throughout his career with the new ball. In the shorter format, he struggled in the middle or back end of the innings, but this is his forte, bowling with the new ball. Now that he's got two left-handers, I think he can be lethal if he gets it right. Came back in. Like Marina said, their teammate, their former teammates. And Zain Abbas was expecting that ball to go away from him, but it curved back in. Excellent delivery. Just few inches away from that off stump. Surprised him totally. Wasn't expecting that. Yes, the expression says a lot. Have to be careful. There is something happening off the surface. Look at that rich vein of form for Zain Abbas. This one's edgy. Extra bounce on that one, but it went past where the third or fourth slip would have been. Zain splashing at that, not in control. That's the modern day cricket. Anything outside off stump, batters would love to go hard on it. Amir Yamin, he's getting some shape and assistance. Would like to maintain that corridor just around off stump, fourth stump probably. Ali Aswan, the youngster, getting into the action early doors. He's not happy. Umar Siddiq, he wanted a single. But on the bounce, it's always easy for the fielder inside the circle. Would have been a trouble if Zain had responded to it. In the air and gone. Skipper Qasim Akram getting into the action. Umar Siddiq is waiting. He's not prepared to walk. Qasim Akram has claimed the catch. Is he disappointed with the stroke? Not quite. I think he's asked the question from the umpires. Keep an eye on that soft signal. There you go. Now you have to have conclusive evidence for this to be turned by the third umpire. What's your take, Marina? What did you see with the naked eye? I think it's a clear catch. I think he had enough hands underneath it. Went straight to him. Was dipping, yes, but I mean it was there to be hit. Checking the no ball first. That's the procedure. No problems there. It's pretty disciplined. And we'll look at that. Yeah, it was dipping. His hands are way ahead of him. Remember, it has to be very conclusive for the third umpire to change the decision that was made on field. You see that ball was dipping. It was a cut shot. I think he's got his fingers underneath it. Third umpire will have to make the call. Once again, Umar Siddiq failed to control the cut shot. The previous delivery, he couldn't middle that one, and this one was just like top edge, ballooned to Qasim Akram. And there you go. It was quite evident the way Qasim Akram claimed the catch. Umar Siddiq looking at his bat. He was expected to do better, but now he'll have to walk back.
Disappointing start for ATF Southern Punjab. 2 for 1. Sway Maqsood joined the playing 11 in the previous game. Did not have a chance to bat. Now is the occasion. We know that these kind of surfaces really suit him. He loves to display his stroke play. He's a very prolific batter for ATF Southern Punjab. 88 not out, that's the best so far. Strike rate, you need to keep an eye on that. They need a good start. ATF Southern Punjab just lost a wicket. Waqas Maqsood, handy cricketer. Just a little bit of swing. Abbas was able to put bat to ball. Anything outside you would love to go after, but again you have to control the shot. Really couldn't get on the top of the bounce. There was no shape, rather he was trying to hit it below or just trying to clear it. Just a half-hearted shot, and he is jubilant, and he couldn't believe his luck. It's there to be hit. Really didn't quite transfer the weight. He was halfway, like we said, half-hearted stroke. That meant he could never got on top of that bounce. And no control, but Qasim Akram and Amir Yamin, they would love that because Central Punjab needs early breakthroughs. This will be a good contest here. Maybe just a little rusty. He suffered injury earlier on in the tournament in Rawalpindi. Making a comeback now. That's how the journey has been for ATF Southern Punjab in this tournament. They had a mixture of wins and losses. Balochistan, they win by 25 runs, DLS. They are gaining momentum. They have made few changes. Biggest was against Central. Little bit of swing again. Sohaib Maqsood, he hails from Multan. And he's prolific at this venue as well. 15 innings, 436 runs. He's made 450s, the best of 88 not out. Marina just said he's prolific. If he comes good, ATF Southern Punjab will be in a very strong position. Regulation field, still a slip in for Waqas. At the toss, Salman Ali Agha said that 160 or 170 he reckons will be a good score. You're out there at the pitch. Do you agree with him? I don't think so. 170 would be on board. It seems like a good pitch, but the batters do have to work hard to get the runs going. They can't easily get the big strokes in. Shows of Raza standing in. We've got another prolific umpire, Faisal Afridi, 29th T20. So I do feel if you can bowl well and discipline on the surface, it's not easy to score runs. 3 runs aren't coming. You have to be patient with your stroke play, and whatever shot you do decide to play, you have to execute it really well. I was talking to Salman at the toss. We played only at 2 venues, but these 2 venues have offered different surfaces. That's why the adjustment is required. Southern Punjab can take the first half of the power play to just get in. And once they get used to the bounce and the pace of the pitch, I think they can still capitalize. You have more time than you think
in a T20 game. Dot to finish off over number 2, 5 for 1. So far, few pitches have been quite deceiving. It looked like a belter, but when you go out and you play and you face the opposition, it does come up with a bit of surprise. You think you can time the ball well, you can hit on the up, but that hasn't been really the case. Once you adjust to that pace of the wicket, that's when you can accelerate. One thing is for sure though, the reason we've had so many close finishes, so many tight contests, been a testament to good wickets this season. Not to forget, there's a lot of work done on the wickets around the country actually, just to make the pitches play better. A lot of work has been done here in Multan as well, in Rawalpindi and Karachi and Lahore. Sweetly driven straight to Qasim Akram. That was a cracking of a shot. Straight to the skipper. That was middled beautifully, but just couldn't find the gap. An awkward bounce. Exactly the point you made, that now that he spent some time getting used to that, and even that wasn't a half volley, but he could hit through the line. Going back to the work done on the pitches in the off season. We saw at Rawalpindi as well, with some cracking pitches. In here, day number 4 of action here in Multan. We've seen everything. Good batting, good bowling. We've seen players getting bounced out, players being able to play the horizontal bat strokes, plenty of cuts and pulls if you're good at them. Southern Punjab camp. Goes past the outside edge, just the angle, taking the ball away from Zain Abbas. Good delivery. Yeah, he's testing him. Good lengths, good areas to bowl. Just enough shape to unsettle him. Not a decisive approach in the shot he attempted. Yes, I do agree with you. I mean, to extract good quality cricket, good competition, you have to have a balanced surfaces as well. Something up for grab for batters, bowlers, spinners, pacers. It has to be leveled. Bit of a slog there. You have to have a good contest between bat and ball. Although it's a 20-over format and you want a lot of 4s and 6s, still nothing like having an even contest. And we've seen in this tournament the close finishes we have, the victory margins of less than 10 runs. We've got quite a number of games that range from 1, 2, 3 runs margins, and then 5 and 6. That means that the contest has been even throughout the game. Yeah, sometimes we do get carried away and get spoiled by an innings like Sharjeel played the other night. Just fireworks. And we expect every batter to do that. Slip still in place. Change of personnel, I think. Down the ground, mid-off has swapped with mid-on. Regulation field. Gone. Extra bounce. Amir Yamin bending his back. Sohaib Maqsood just wafting at that delivery. The bounce got the better of him. Excellent catch. Irfan Niazi is a tall lad. He caught it, fingers pointing up. Amir Yamin, he set the trap for Sohaib Maqsood. Outside off stump, he knew he'll go after it. No footwork, just the bat trying to find a connection in. He did, but straight to the slip. He's quite animated, Amir Yamin, and he deserved that.
against his former team. Zoeb Maqsood, the big fish is gone. 2 down, ATF Southern Punjab on 6. Just the 250s to his name. 2 slips in place. When was the last time you saw a slipper catching above his head in Pakistan? A rare sight. He's off the mark. I know you say yesterday, and that was the case, you're right. Great cricket to watch. Captain, he has a role to play. He has that positive attitude, can-do attitude. He wasn't having enough say with the bat, but he made sure he capitalized with the ball. They are in trouble for sure, ATF Southern Punjab. That's the 2 wickets, Amir Yamin. Once again, the batters failing to cope with the bounce. Neat hands in the slip from Irfanullah Niazi. Amir Yamin, really it meant a lot for him because this is his former teammate and he wants to prove a point there. So far he's been their nemesis. 2 wickets for him. But delivery allowed Agha to free his arms. He'll take any run that comes his way. Runs have been hard to come by for him. That's the trap. Brilliantly bowled. Just the hard length and it's continued to go straight. Probably was expecting some inside swing. It wasn't there. And good take in the first slip. You need that sort of push. I'm talking about Amir Yamin. He's playing against your former team. You have a point to prove. Abbas clipped it very neatly. He will earn a boundary. Bit too straight there on that occasion from Waqas Maqsood. Then Abbas was good enough to just put bat to ball. Much needed boundary. They'll ease some pressure. He's really good. Wristy player to watch. Just erring a little bit straight this time. And the timing was superb on it. He'll bring a lot of wrist into play. Have a look at that. Just a flick behind square. Too straight again. Then would feel he missed out there. Waqas Maqsood is getting that ball to swing. Probably that's why he got a bit greedy. Tried to bowl the magic ball and start from midland leg and hit the top of off. Yeah, he's forcing him to play that cross-batted shot. Zan Abbas, he had a great day with the bat against Northern. Few lucky edges flying over, but he was in control. Anything shorter, he loves to play that horizontal shots. That was a brilliant against Zaman Khan. This, oh, I haven't seen that sort of a shot for a while. Punched it down the ground. Agha is looking proactive today. Good signs for ATF Southern Punjab. Yassan has been prolific. And in that package we saw that some of his strokes, see what Agha scrambling through for a single. Yes, he's good with horizontal bat strokes. That pickup shot that he possesses, those 2 shots could be handy on this pitch. The only one who's
to survive the 10 deliveries. Probably this is just about time where he will be gauging the pace and bounce a bit better. No delivery. Waqas Maqsood got all the tricks in the bag. Yeah, but talking about Zain, it would be important for him not to give it away now, because ATF Southern Punjab may just revise their target for a moment. Rebuilding phase at the moment. Got some crowd here. It's hot day, but passion never dies for cricket. Good to see these smiley faces. Expect some more people to come this evening when it cools down a little bit. There's plenty of action happening, and each and every game is vitally important. End of 4, ADF Southern Punjab, 15 for 2. आमिर यामीन के लिए ये अच्छी से पहर है। उनने पहले ही 2 ओवर्स में 2 विकेटें हासिल की, और लेकिन खासी खराब गेंद थी, आज सजावार थी, इससे कट कर दिया जैन अब्बास ने। थर्ड मैन के फील्डर वाइड थे, लेकिन इसके बावजूद वो गेंद को नहीं रोक सके। जैन अब्बास अब डबल फिगर में पहुंच गए। आज एक बार फिर बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये पहला खराब बॉल किया है आमिर यामीन ने इस इनिंग का, आउटसाइड द ऑफ स्टंप। जब आप वेट देंगे इस पिच पे तो रन्स तो आएंगे। अच्छे भले बॉल करते हुए खराब बॉल कर दिया। प्रेशर को बनाए रखना है। ये गेंद कदरे नीचे रही, और हमने इस पिच में आज स्लिप लगती हुई भी देखी है। सोहेब मकसूद का कैच स्लिप के फील्डर ने बड़ी अच्छी हाइट पर पकड़ा। ऑन द ऑफ वो खेलने के लिए गए थे, ये गेंद नीचे रही, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि ये भी अच्छी बैटिंग पिच होगी और सपोर्टिंग पिच होगी कल की तरह, क्योंकि कल जैसी जो पिच थी वो बेमिसाल थी। इस बार आहिस्ता गेंद करने की भी कोशिश की थी खुद बॉलर ने। इनटू द पिच कटर किया था आमिर यामीन ने, और पिचेस का आपने जिक्र किया तो बहुत शानदार पिचेस रही हैं, बहुत सपोर्टिव पिचेस रही हैं रावलपिंडी में भी और यहाँ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भी। क्रिकेट देखने का मजा आया, मैं बहुत शानदार क्रिकेट देखी है, और उसको डबल कर दिया कल शर्जील खान की सेंचुरी ने। और एक और चौका। अगर ऑफ स्टंप के बाहर इतनी जगह देंगे तो फिर बैट्समैन को बेलगाम होने से आप नहीं रोक सकेंगे। आमिर यामीन की बहुत ज्यादा रफ्तार नहीं है। ये खराब बॉलिंग है। अगर आपका फील्डर जो थर्ड वाला है वो सर्कल के अंदर है तो आप आउटसाइड द ऑफ स्टंप इस तरीके से इजी रन्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ बल्ला ही लगाना होता है। बैटर को 4 रन हासिल कर लिए, और जिस तरह की फॉर्म जैन अब्बास की चल रही है वो नहीं छोड़ने वाले हैं ऐसी बॉलिंग को। यहाँ पे बहुत जल्दी चेंजेस कर रहे हैं, देखना होगा, संभलना होगा, क्योंकि हमने देखा है कि चेस के लिए जो डे गेम्स हैं इतने करामत साबित नहीं हुए हैं। या अब ज्यादा ये बेहतर फील्ड है कि थर्ड मैन को रिवायती पोजीशन पर भेज दिया गया, बाउंड्री पर हुनैन शाह को, और उससे पहले अली असफंद जो वाइड थर्ड मैन पर खड़े हुए थे उन्हें बैकवर्ड पॉइंट पर लाया गया पहले चौके के बाद। तो बड़ी चालाकी से जैन अब्बास ने पहला शॉट फोर्स किया, और उसके बाद अगली बार उन्होंने नरम हाथों से खेला ताकि गेंद ज्यादा फाइन चली जाए। और सदर्न पंजाब को ज्यादा जल्दी भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर ये 150 तक पहुंच जाते हैं, डे गेम्स की बात मैं कर रहा हूं, तो चेस करना इतना आसान नहीं है। तो इतनी कोई ज्यादा खलबली की बात नहीं है। 2 विकेट्स ऑल तो गिर गई हैं। अगर आप अच्छी नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स खेलें, नॉर्मल बैटिंग करें और अपना स्कोर 150 तक ले जाएं तो फिर भी आप गेम में रहेंगे। इस बार पिच को जरा सा छोड़कर भागे हैं जैन अब्बास। वो जबानी मुत्तला किया था अंपायर फैसल आफरीदी ने पिछली गेंद से पहले कि आप
स्ट्रोक खेलने के बाद वो डेंजर एरिया की तरफ आ रहे हैं। यहाँ फॉलो थ्रू का ध्यान रखना होगा। सेंट्रल पंजाब की बात अगर हम करें तो उनकी बॉलिंग में बहुत जान आ गई है जब से वकास मकसूद ने टीम को ज्वाइन किया। ये जो आप जिक्र कर रहे थे फॉलो थ्रू में, लेकिन ये खैर ये सही है, इतना ज्यादा मसला नहीं है, लेकिन शायद उनको पहले इंटीमेट कर रहे हैं कि जरा ध्यान कीजिए, ख्याल कीजिए। ये दोनों काफी जानते होंगे एक दूसरे को, क्योंकि आमिर यामीन सदर्न पंजाब का हिस्सा रह चुके हैं, एक ही इलाके से बिलोंग करते हैं। और ज़ैन अब्बास का जो ताल्लुक है वो कबीरवाला से। अच्छी डिलीवरी इस बार ओपन अप किया सलमान अली आगा को। आमिर यामीन ने इस ओवर में 9 रन दिए। 24 पर 2 एटीएफ सदर्न पंजाब। दोनों विकेट्स आमिर यामीन के नाम रही। एक रन बना सके उमर सिद्दीक, इन फॉर्म थे, अच्छी इनिंग खेली थी जब आखिरी बार यहाँ मैदान में उतरे थे। शोएब मकसूद का भी कम बैक हो रहा है आफ्टर इंजरी के बाद, वो भी एक रन बना सके। और ये पार्टनरशिप बहुत अहम है ज़ैन अब्बास और सलमान अली आगा की। शरून सिराज बहुत टैलेंटेड है, यूसुफ बाबर बाएं हाथ से खेलने वाले उकाड़ा से इनका ताल्लुक, ये भी बहुत ही सॉलिड फॉर्मिडेबल मिडिल ऑर्डर बैटर हैं। इमरान रंधावा भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं और हसन खान भी। तो बैटिंग एटीएफ सदर्न पंजाब की काफी फर्म है। हुनैन शाह जो तेज रफ्तार बॉलर हैं और यकीनी तौर पर इस पिच पर वो दिलचस्पी का बायस होंगे, क्योंकि जब 2 दिन पहले खेले थे तो उस विकेट में इतनी रफ्तार नहीं थी, इतना बाउंस नहीं था। ये अच्छा मुकाबला होने वाला है। किन फॉर्म बैट्समैन का एक तेज बॉलर के साथ ज़ैन अब्बास बनाम हुनैन। शॉट खेला, फील्डर पहुंच जाएंगे स्क्वायर लेग से और सिर्फ एक ही रन तक उन्होंने महदूद किया। आला फील्डिंग का मुजाहरा न्याजी की जानिब से, अच्छी एंटिसिपेशन। बहुत अच्छे फिट क्रिकेटर हैं। इससे पहले हमने देखा उन्होंने स्लिप में बहुत शानदार कैच पकड़ा और इस बार डीप स्क्वायर लेग पे भागते हुए रन को बचाया। दूसरा मैच खेल रहे हैं हुनैन शाह, 2 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। नसीम शाह जो पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट के फास्ट बॉलर हैं, उभरते हुए फास्ट बॉलर हैं, एक सुपरस्टार का स्टेटस हासिल किया उन्होंने। उनके छोटे भाई हैं और ऐसा लगता है कि जैसे ये लंबी रेस के घोड़े हैं, लंबी बॉलिंग करना जानते हैं। नई गेंद के साथ ये आउट स्विंग करना जानते हैं हुनैन शाह। नसीम शाह जो है वो ज्यादातर नई गेंद के साथ इन स्विंग करते हैं, जो कि इनके बड़े भाई हैं। दोनों का बॉलिंग एक्शन, दोनों का रन अप मिलता जुलता है। हुनैन शाह जो है रफ्तार में भी मुकाबले पर आ रहे हैं अपने भाई से। यहाँ बहुत ही सॉलिड जिसामत के हैं दोनों भाई और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बहुत अच्छा साइन है कि ये भी 140 प्लस बॉल कर लेते हैं। शानदार लाजवाब स्क्वायर ड्राइव, 4 रन्स, बिल्कुल कुव्वत सर्फ नहीं की, प्लेसमेंट काबिल दी थी सलमान अली आगा की। या सलमान अली आगा ने कहा था कि मैं रन्स करूंगा एक अहम मैच में। क्या ये वो अहम मैच है? क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं बड़े मैच में, जो इंपॉर्टेंट मैच होगा, ये अच्छा शॉट है, वेट किया बॉल का, बॉल की तरफ नहीं गए। और यही सही तरीका है इस पिच पे खेलने का कि आप जितना लेट खेलेंगे उतने आप कामयाब होंगे। दोनों फील्डर्स के दरमियान से खेल के 4 रन हासिल किए। रन्स ड्यू हैं सलमान अली आगा के। क्या ये वो मैच हो सकता है जहां पे अपनी फॉर्म को बहाल करेंगे? कल के दोनों मैचेस में जिन टीमों ने पहले बैटिंग की, एक मैच में 36 रन बने, दूसरे में 33 रन बने, लेकिन जो दूसरी इनिंग्स थी दोनों मैचों में वो 50 से ज्यादा रन बने, 55 और 59 रन। लेकिन आज की जो विकेट है इसमें उतनी रफ्तार नहीं है जितनी के कल लगी थी, जिस पर बाउंस था। बैट्समैन बैकफुट पर शॉट खेलते हुए खासे महसूस हुए, खासतौर पर शर्जील खान जिन्होंने टूर्नामेंट की पहली सेंचुरी बनाई। शर्जील खान की तो क्वालिटी की क्या बात है, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, सिंगल हैंडेडली मैच जिताया। और उनको इन पिचेस पे बैटिंग का मजा आएगा क्योंकि बॉल अच्छा तरीके से बल्ले पे आ रहा है।
और लगी है पैड पर, क्या सामने थे? जी हाँ, अंपायर ने इस अपील को मंजूर कर लिया। हुनैन शाह देर तक अंपायर को कायल करने की कोशिश करते रहे। सलमान अली आगा फॉल ओवर कर गए, उनका सर ऑफ साइड में गिर गया था और इन स्विंग पर हुनैन शाह ने ये मुकाबला जीत लिया। यहाँ बहुत ही शानदार डिलीवरी हुनैन शाह की जानिब से। यहाँ पे बहुत ही करीबी मामला हो सकता है। अंपायर को एक बार देखना जरूर होगा, इस स्नोबॉल को चेक करना होगा। जी हाँ, देखना होगा, ये करीबी मामला है। यहाँ जो पहला एंगल था उससे लगता था कि शायद इनकी एड़ी का कुछ हिस्सा जो है जिस वक्त वो पड़ा है तो वो सही जगह पर था, लेकिन इस एंगल से ये नो बॉल दी जा सकती। यहाँ तो खासा हम कह सकते हैं कि ये 19-20 पैसा है, क्योंकि इस एंगल से ऐसा लगता है कि जैसे एड़ी का कुछ हिस्सा है लकीर के पिछली तरफ भी। टीवी अंपायर ने आउट करार दिया। यहाँ ये सही फैसला था क्योंकि नो बॉल नहीं थी। सलमान अली आगा तो आउट करार दिया गया और ज्यादा लंबी इनिंग्स आज फिर नहीं खेल सके। बैटिंग जो है ये कुछ फॉर्म इनकी रूठी रही है इस पूरे टूर्नामेंट में, पिंडी के बाद मुल्तान में भी। जी हाँ, जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो अक्सर डिसीजन भी आपके अगेंस्ट जाते हैं। जो 19-20 डिसीजन भी होता है वो भी आपके अगेंस्ट जाता है, और यही ऐसा कुछ सलमान अली आगा के साथ हो रहा है। नो बॉल भी अब हम दोबारा देखेंगे, जो LBW की अपील उस पर को भी हम गौर करेंगे। ये अच्छी खबर नहीं है ATF सदर्न पंजाब के लिए, क्योंकि अब 29 पर 3 आउट हो चुके हैं। एक और बहुत ही टैलेंटेड उभरते हुए बैटर शहरून सिराज, बहुत कुछ एक्सपेक्टेड है इनसे, और ये एक प्लेटफॉर्म सेट है कि आप यहाँ से अच्छी इनिंग खेल सकें अपनी टीम के लिए, क्योंकि टीम को ज़रूरत है। बड़ा मैच है, सेकंड लास्ट नंबर पे टीम है। अगर यहाँ से मुश्किलात से निकालते हैं तो ही इनकी क्वालिटी और सही पोटेंशियल का पता चलेगा। 9वां मैच खेल रहे हैं, 189 रन बना चुके हैं। स्ट्राइक रेट बहुत शानदार है, 130 की। यहाँ स्लिप ला खड़ी की है। इरफान न्याजी इस वक्त स्लिप में मौजूद है नए बैट्समैन के लिए। एतमाद से खेला अगले कदम पर आते हुए ऑफ साइड में शाहरून ने, और ये हम देख सकते हैं कि गेंद ये लेग स्टंप को हिट कर जाती। जी हाँ, बिल्कुल, ये अच्छा डिसीजन है जोसेफ रजा की जानिब से। बहुत ही शानदार डिलीवरी। ये दोनों भाइयों को नए बॉल से विकेट लेना आती हैं, ये तो कहना होगा। डिसअपॉइंटेड जरूर हैं, क्योंकि शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह से पहला चौका हासिल किया बड़ी इनिंग खेलेंगे। यहाँ पे 6 रन 6 ओवर्स मुकम्मल हुए, 29 पर 3 ATF सदर्न पंजाब। जब डेस्परेट हालात होते हैं तो ऐसा कुछ होता है जो हमने देखा। शोएब मलिक और शायद अब्दुल रजाक जो कोच बाहर बैठे हैं, उनके अंदर मुकालमा हुआ। काफी इन्वॉल्व नजर आए हैं हमें अब्दुल रजाक, स्पेशली आखिरी 2 मैचेस में, क्योंकि इतनी बड़ी साइड है सेंट्रल पंजाब की और स्ट्रगल करती हुई नजर आई है हमें नेशनल T20 में। उसामा मीर को आप बॉलिंग के लिए लेके आए हैं, 52 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। इकोनॉमी बहुत बहुत इंप्रेसिव है। यहाँ पे ये अच्छी चेंज होगी, क्योंकि प्रेशर इस वक्त सदर्न पंजाब के ऊपर है। एक और विकेट जैन अब्बास की तो डेफिनेटली कमांडिंग पोजीशन में सेंट्रल पंजाब हो जाएंगे। सेंट्रल पंजाब का पहले ही बोलबाला हो चुका है, क्योंकि ये जो पावर प्ले था जीता है कासिम अकरम और उनकी टीम ने। ये कम तरीन स्कोर है किसी भी टीम का पहले 6 ओवर्स में 29 रन, सबसे खराब कारकर्दगी है।
लेकिन अब सारा इन्हिसार जैन अब्बास पर है। उनको मौके मिलेंगे यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट करने के। शारून उनके साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम एक अच्छी इनिंग्स की तवक्को कर सकते हैं। लेकिन सेंट्रल पंजाब एक मुख्तलिफ रूप में नजर आई है। पिछले मैच में भी उनके बॉलर्स ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। खास तौर पर हुनैन शाह की जो आमद है वो इस टीम के लिए एक बहुत ही अच्छा शगुन साबित हुई है। विकेट टेकर हैं। जी, ना सिर्फ हुनैन शाह, उनके साथ वकास मकसूद को मैं बहुत क्रेडिट दूंगा, क्योंकि एक एंड से उन्होंने बांधे रखा है, रन्स नहीं दिए हैं, प्रेशर डाले रखा है और विकेट्स जो है दूसरे एंड से हासिल किया हुनैन ने भी। और आज हमने देखा आमिर यामीन ने भी। इंटेंट आज अच्छी नजर आई है। ये ऐसी इंटेंट है जो कल हमें सिंध की साइड में नजर आई थी जब सिंध उतरे थे अपना मैच खेलने के लिए, क्योंकि पहले ही बॉल से इंटेंट उनकी पॉजिटिव थी, डेस्परेट थे कि मैच जीतना है। और यहाँ पे ऐसा ही कुछ हमें सेंट्रल की बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा है कि इंटेंट आपकी बहुत शानदार है और रिजल्ट उनको मिलता हुआ। सिद्ध को थोड़ा सा फाइन किया गया है। उसामा मीर शायद कप्तान ख्याल कर रहे हूँ या खुद जो सिप के फील्डर हैं इस वक्त तैयब ताहिर की गेंद ज्यादा टर्न होकर उनकी तरफ आएगी। आप देख सकते हैं मैच रेफरी मौजूद हैं, इकबाल शेख, और उनके साथ वलीद याकूब टीवी अंपायर हैं। ये इकबाल शेख जो थे ये 2005 में जो पहला नेशनल T20 टूर्नामेंट हुआ था पाकिस्तान में लाहौर में, तो ये हैदराबाद की इन्होंने नुमाइंदगी की थी। हाँ, रियाज उनके मुतालिक बताया गया कि वो भी हैदराबाद की टीम में शामिल थे उस टूर्नामेंट में। इतना ज्यादा गेंद टर्न हुई नहीं अली इस फेज में। मुल्तान में गो के स्पिनर्स को खेलना आसान भी नहीं रहा, लेकिन वो हमने जो टर्न होती है वो देखी नहीं है साइडवेज। जी, ज्यादा टर्न से ज्यादा स्किट होता हुआ नजर आया बॉल हमें कल वाले स्पेशली मैच में और नाइट मैच में भी। स्किट ज्यादा हो रहा है रादर देन स्पिन होने के। और उसामा मीर वैसे भी नॉर्मली इतना स्पिन नहीं करते हैं, हाइट का एडवांटेज लेते हैं। इनकी लाइन और लेंथ बहुत शानदार है। T20 क्रिकेट की अगर हम बात करें, T20 क्रिकेट के ये बेहतरीन लेग स्पिनर हैं। 7 ओवर्स का इख्तिताम हुआ, 34 पर 3 ATF सदर्न पंजाब। और स्पिन की आप बात कर रहे थे तारिक भाई, तो जैसे जैसे T20 क्रिकेट है तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि ज्यादा लेग स्पिनर्स जितने आते हैं वो तेज बॉल करते हैं। क्या ये देखिए पावर प्ले में विकेटें गिरती रही। ये तीसरी विकेट थी जो हासिल की यहाँ पर हुनैन शाह ने। यहाँ 2 विकेटें इससे पहले हासिल की थी सामने वाले एंड से आमिर यामीन ने। इस तरफ फास्ट बॉलर्स जो हैं उन्होंने अपनी स्विंग से और रफ्तार से खासा मजबूर किया है। बिल्कुल दीवार से जा लगी है ATF सदर्न पंजाब की टीम। अच्छा आगाज है हुनैन शाह की जानिब से, ना सिर्फ इस मैच में बल्कि उनके करियर का। T20 की अगर हम बात करें, अच्छा आगाज किया है। ऐसा लगता है कि ये लंबी क्रिकेट खेलेंगे एटलीस्ट सेंट्रल पंजाब के लिए, क्योंकि जब आप पहले सीजन में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो नेचुरली आपकी रिस्पेक्ट लेवल बहुत बढ़ जाता है। अच्छे जानदार बॉलर हैं।
अच्छा डिफ्लेक्ट किया इस बार, 1 रन का मजीद इजाफा। एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है एटीएफ सदर्न पंजाब को इस मैच में पूरी तरह से वापस आने के लिए, और दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बड़ी अहमियत रखता है। सदर्न पंजाब की टीम टूर्नामेंट में रहने के लिए इन दिनों कोशां है, और दूसरी जानिब जो सेंट्रल पंजाब को अब अगर एक भी नाकामी हुई तो वो भी इस चैंपियनशिप में सेमीफाइनल की दौड़ से हाथ धो बैठेंगे। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है सदर्न पंजाब को, क्योंकि अगर ऐसे बैटिंग करते हैं, नॉर्मल क्रिकेट खेलते हुए 150 तक भी पहुंचते हैं तो भी एक मैच हमें देखने को अच्छा मिल सकता है, क्योंकि चेज करना इतना आसान है नहीं सेकंड टाइम जब आप बैट करते हैं। और बॉलिंग भी बहुत शानदार है, स्पेशली जो नया बॉल के बॉलर्स हैं सदर्न पंजाब के लिए, अली माजिद शाह जिसमें शामिल है, एक्स फैक्टर हैं। खासे लंबे रन अप से जा रहे हैं हुनैन शाह। यहाँ रफ्तार का कोई नेमोल बदल नहीं है T20 क्रिकेट में। हालांकि एक ख्याल ये भी किया जाता है कि जितनी तेज आती है उतनी तेज जाती है, लेकिन अगर आप आउटराइट तेज बॉलर हैं, 140 से ज्यादा रफ्तार से आप बॉलिंग कर सकते हैं तो बैट्समैन घबराता है। और अगर दोनों एंड्स पर इस तरह की सहूलत मयसर हो कप्तान को तो फिर और ज्यादा मुश्किलात हो जाती हैं। विकेट जैसी भी हो, हालांकि ये विकेट बैटिंग करने के लिए जो है वो बेहतर लग रही है, वक्त है बैट्समैन के पास। ये अच्छा सिंगल लिया, शोएब मलिक खासा पीछे खड़े हुए थे, स्कोरबोर्ड को मुतहर्रिक रखे हुए हैं। जैन अब्बास दूसरे एंड पर विकेटें गिरने के बावजूद अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मिडल कर रहे हैं गेंद को। गर्म मौसम है मुल्तान में और हल्की हल्की हवा जरूर चल रही है, लेकिन ये लू है, हवा से ज्यादा कह सकते हैं कि लू के आसार हैं। ये ऑफ साइड की फील्ड जिसमें डीप कवर है, डीप थर्ड मैन है, इस मौके पर 5 फील्डर बाउंड्री पर खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन ये 4 किए हुए हैं कप्तान कासिम अकरम ने, क्योंकि विकेटें गिरी हुई हैं। 8 ओवर्स मुकम्मल हुए, 37 पर 3। Ball has clearly dominated these early exchanges here. Amir Yamin with 2 early wickets. Hunain Shah struck the big blow, removed the skipper. This innings has gone nowhere. It's a jet-lagged start this from ATF Southern Punjab's 37 for 3 in 8 overs. You want to be a touch careful not to lose wickets in the power play, but this is a little too much. You're just adding on pressure to the batsmen who will be coming in, and then it has a whole ripple effect all the way down to the 20th over. Yesterday we saw 96 were scored in the first 10, and then the score overall achieved was just around 150. If you look at the scorecard, it's strange. Zan Abbas has got 25 of 25. So the other batters have only got 13, and that's 4 of them, because 3 have gone back. Shairoon is in the middle.
I watched each and every ball. I couldn't come up with the explanation of why this has been such a struggle for ATF Southern Punjab. I think it's overall. They're looking at evidence. Games yesterday, they feel 150-60 is a good total on this pitch, and it'll be tough to chase it down. But then you're only working on that 150 while batting first. Maybe you can get more. Faisal Akram not playing today. In the background, Stream Far on the bench. In the air for a moment. So it's just, I think, they made friendship with the fact that this is a 150-60 wicket. And we can get there if we just keep wickets intact. You're absolutely right, because a lot of these games are played in the mind. Sharoon, who's normally a free-flowing batter, really hasn't got any rhythm to his innings today. Either early loss of wickets, either too much importance to this game as we're heading towards the crucial part of the tournament. This is in the air. He hasn't hit it cleanly. And taken. Tayyip Tahir underneath it. You can bet that he won't drop those. And this is the informed man. Another very, very soft dismissal. He just lost his shape completely. He fell away from the stroke. And that's why he couldn't get any control. The military medium of Faizan was good enough to take care of Zain Abbas, who's gone for 25. ADF Southern Punjab reeling at 39 for 4. ATF Southern Punjab 39 for 4. The new batter in is Yusuf Babar, left-handed bat. It's his third match. Things are very, very brand new for him. You saw a lot of him last year in the first class game. He's a prolific red ball cricketer. He had a decent season with ATF Southern Punjab. His first outing in this competition, and a baptism of fire for him. Team struggling. ATF Southern Punjab has been struggling. Now, if you look at lowest power plays in this national T20 edition, we have this is Zain Abbas's wicket. It's a good catch. We saw a lot of very casual, ordinary fielding last night, but this is good. Tayyip Tahir. So the lowest power plays 29 for 3. 30 for 3, 31 for 2, 32 for 3. Out of these 4, 3 times Southern Punjab features in. And today, ATF Southern Punjab has the lowest power play, 29 for 3. So this is evidence. Nine overs gone, 40 for 4. Wow, samosas. I've been asking for those. I'm sure I'm going to get some today. And if I do, I'll show it on the camera for you. Definitely. A cup of tea in the evening. And this. I need to stay away from those, but you know better that I won't once I get some.
Or a fried food. We want samosa. We want samosa. I hope everyone's hearing it. Because I think the message has gone through. of course, you come to Multan and you don't have Multan samosa. That's not possible. Though Multan is known for other good things, samosa once in a while is fine. Once in a while, have half a dozen. That's fine. Well, I know few of our team members, they won't even look at them. Marina is one of them. She's been in the gym at 1 a.m. Marina hides food in her room and she eats there. I'm telling you, they all eat. Nobody can survive without food. That makes me feel a bit better. I think ATF Southern Punjab needs some samosas as well. They need to get some firepower going behind that stroke play. 40 for 4, halfway in the innings. There has to be a purpose. They're playing a match. It's completely inexplicable there, the approach from ATF Southern Punjab. Would have been a wide. He's made sure that he puts back to it. And even that bat that he's attempted to put on it, it's a nothing shot. Once again, you look at those feet, they're absolutely static. They're not moving towards the ball to get closer and allow those hands to get closer in doing so. It's inexplicable, like I was saying. It could just be mental because the conditions are not where you're 40 for 4 after 9.2. Haven't turned up at all, ATM Southern Punjab batters. It's in the air, but the field is way too deep. I think it's the bounce also that's playing in the back of the mind of the batters. They're not really coming up and attacking if they want to, staying away from the line of the ball and just, I don't know, you just sense a bit of uncertainty there in shot selection. Yeah, good point about the bounce. Even if you see that last one, Sharoon had got quite low hands. That's why it doesn't allow him to get on top of the bounce and hit it on the rise. It's just in the back of the mind. Sharoon has spent 11 deliveries. He should be getting into a phase where he'd be getting used to that extra bounce and pace. Every time it happens, the batter loses their wicket. Boundaries have been few and far between. 25 deliveries since the last boundaries. That's 4.1 overs in a T20 game. What's the hurry? That's 20% of your innings. Yeah, what's the hurry? He's all at sea at the moment, Yusuf Babar. Describe this shot. A nothing shot. It's pitched outside leg, bouncing over. The line was pretty straight. This is wide open spaces on the onside. Just put bat to ball and there's a run almost every time. That shows that the batters, they haven't got clarity in their head. A lot of this game is played in the head, like I said before. Once you have scrambled brains, your decision making takes effect. And all at sea, like you just said. Yusuf Babar will keep strike. Just one, in fact, 2 runs of the over. Halfway stage, 42 for 4.
Faizan, such a player in any side is a blessing. He can bat, he can bowl a bit, and he has a role to play and he executes that. There are certain players who just completely have shut eyes onto, or rather blinkers onto what's happening around them. So if the side is 40 for 4 or 25 for 2, they'll come out there and they'll start hitting. Because they back themselves. And that's how they get their team out. The best part is when you go out there, yes, the pressure is there. You take the fight. To the opposition. A captain of the fielding side would think 25 for 2. You know, let's tighten the screws there. And suddenly some guy comes and he starts smashing you and you're taken off guard. See, even that delivery is the evidence. Sharoon was getting ready for that big wind-up, clearing the front leg. Could we also conclude that there are few players who are good back foot players and good a little bit of skills set as well into the equation? Like I said, if you got a skill set like Sharjeel, who enjoys the bounce, he likes the cut and pull, gets on top of the bounce, he will enjoy these conditions. These players have given me an impression they're not really the ideal back foot players that these wickets would require. And not been able to make the adjustment that's required soon enough in this format. 11 gone, 47 for 4. Those wickets have really pegged them back. Not many tall buildings for ATF Southern Punjab. I feel the time is running out. They've lost one wicket too many, in my opinion. Well, they're only themselves to blame. Like Umar Siddique, 4 balls faced. Sohaib Maqsood, 5 balls faced, just 1 run for both of them. Chiron Siraj batting 14 balls for his 7. Yusuf Babar 8 balls for his 4. Zain Abbas in form 26 balls for 25. Oh, is he playing football? What was that all about? You can injure yourself, you can hurt yourself. You get your boot on top of the ball and that's it. Waqas Maqsood is not one of the swift movers in the field. There you go. If he had kicked that one, probably it would have kicked him into the boundary. Sloppy effort. He's an international cricketer, Waqas Maqsood.
got to have more athleticism than that. This day and age, it's relentless in the field. You remember the good old days when the fast bowlers would be standing at third man, fine leg. Not only you're giving them rest, but also you say that, you know, you don't expect them to be the best of fielders. But now, you can't hide anyone. Jimmy Anderson stands in slip. Yusuf Babar has tried everything in this little innings. Still thinking to himself, with the next run is coming. He's tried the late cut, the dab, the reverse or switch hit. He's lucky that a clock couldn't grab onto that opportunity. Just the regulation, 4 fielders in the ring, and it's proving to be hard to even find a single. Plenty of gaps in the field, but Yusuf Babar has hit every one of the last 3 deliveries. Just a single will bring up the 50. And that will also mark the slowest 50 by any team in the National T20 in Multan. Taken 11.5 overs for that. You won't be happy with this scoreline if you were playing a 50-over game, let alone a 20-over game. I wouldn't take that for 50 over game as well. Why? Why should I? So now 8 overs are left after this. They need 100 runs to get to 150. $12 gone, 51 for 4. जैन अब्बास के अलावा कोई एक भी बैट्समैन अब तक डबल फिगर में नहीं आया। सिराज और यूसुफ बाबर, अब यही दोनों हम कह सकते हैं कि तवक्को का मरकज हैं। अच्छा शॉट, कवर ड्राइव किया, लेकिन वहां पर राह रोक लिया आकर अली ने। 52 पर 4 खिलाड़ी आउट हैं और इसके बाद सिर्फ 7 ओवर्स का खेल बाकी रह जाएगा। तो एटीएफ सदर्न पंजाब की टीम जो है वो दोनों काउंट्स पर ही बहुत पीछे है। 4 विकेटें भी गंवाई हुई हैं और रन्स भी नहीं बन सके। क्या वजह क्या लगती है? बॉलिंग बहुत बेहतर हुई है या बैटिंग उस म्यार की नहीं हुई? मरीना इकबाल के सामने हम ये सवाल रखते हैं। बैटिंग का म्यार बिल्कुल अच्छा नहीं था। कुछ शॉट सिलेक्शंस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान रहा है। बॉलिंग अच्छी की है, इसका फायदा उठाया है। रन्स इतने आसानी से आ नहीं रहे सरफेस पे, लेकिन मैंने पहले भी ये बात की थी कि थोड़ा सा सरफेस की पेस पे एडजस्ट कर लें तो फिर रन्स बनाने आसान है, लेकिन उस तरह खुले रन्स बनाने में मुश्किल ज़रूर हो रही है। अप्रोच थोड़ी सी एटीएफ सदर्न पंजाब की लग रही थी कि टॉस हार के, चाहे उन्होंने जैसे बोला था कि पहले बॉलिंग करना चाह रहे हैं, कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे पहले बैटिंग करने में। क्या रहा यहाँ पर दूसरा ले सकेंगे? ख्वाहिश जाहिर की थी शाहरून ने, लेकिन यूसुफ ने जब मुड़कर देखा तो फील्डर शुएब मलिक थे, इसलिए उन्होंने खतरा मोल लिया नहीं। आज भी शुएब मलिक जो हैं वो गेंद पर अटैक करते हैं जब ये आउटफील्ड में होते हैं। इंटरनेशनल बड़े बड़े बैट्समैन घबराते रहे हैं इनके सामने रन लेने से। चाशिया, यहाँ पर 1 से ज्यादा रन होने के ऑफ साइड स्वीपर गेंद तक जा पहुंचे आमिर यामीन। थोड़ी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी यूसुफ और शरून को। बड़ी हिट के लिए ज्यादा जा रहे हैं
ये भूल रहे हैं कि ग्राउंड बहुत बड़ा है, स्क्वायर बड़ा है। सिंगल और डबल्स पे अगर ज़्यादा इन्हिसार किया जाए तो एक बाउंड्री ऑप्शन वाली डिलीवरी ज़रूर देंगे सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स, उसका बस फ़ायदा उठाना है। लेकिन थोड़ी सी अटैकिंग अप्रोच नज़र आनी चाहिए क्योंकि बहुत पीछे हैं। ये अभी तक का सबसे कम स्कोर रहा है 12 ओवर्स का, अगर नज़र डालें हम टूर्नामेंट में। ये गेंद वाइड होगी, पहले से चलना शुरू कर दिया था, आगे पीछे हो रहे थे यूसुफ बाबर फैजान को परेशान करने के लिए। आजकल यही ज्यादा तरीका इख्तियार करते हैं बैट्समैन T20 में कि वो बॉलर को उसकी लाइन से हटाना चाहते हैं। हाँ जी, क्रीज का यूज काफी होता है, कुछ कदम बाहर निकाल लेते हैं या शफल कर जाते हैं ऑफ साइड पे, स्क्वायर के पीछे ज्यादा स्कोर करने की ताक में होते हैं। लेग साइड में चिप कर दिया, एक और रन के लिए बिजी क्रिकेटर हैं यूसुफ बाबर। रेनाला खुद से इनका ताल्लुक है और ये शारून जो हैं ये साहिवाल के बासी हैं। एक ज़माने में जो रेनाला खुर्द था ये भी साहिवाल की एक बस्ती थी, साहिवाल का एक कस्बा था रेनाला, लेकिन बाद में ओकाड़ा और साहिवाल ये दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बन गए 1982 में। कट किया लेकिन खराब फील्डिंग और 4 रन बन गए। वकास मकसूद से बिल्कुल खुश नहीं होंगे मोहम्मद फैजान, उन्हें जल्दी झुक जाना चाहिए था इस गेंद पर। ये पहली बार देखने को नहीं मिला, बहुत ही मामूली अटेम्प्ट थी ये वकास मकसूद की, सीधा गेंद उनके हाथों में गया था, देर कर दी इन्होंने झुकने में और ये 44 गेंदों के बाद पहली बाउंड्री हासिल की ATF सदर्न पंजाब ने। आमिर फरीदी जो इंटरनेशनल मैचों में भी स्कोरिंग करते आए हैं, कानपुर से इनका ताल्लुक है, स्कोरर का ऑफिशियल स्कोरर है इस मुकाबले के। एक जमाने में यहाँ मुल्तान में एक झस्कानी साहब आया करते थे बहावलपुर से स्कोरिंग करने के लिए। ये नहीं रुक सकेगी, हालांकि अखलाक ने आवाज लगाई थी लेकिन ये बहुत पहुंच से बाहर थी। ये रिवर्स स्वीप भरपूर तरीके से किया यूसुफ बाबर ने, गेंद उन्हें मिल गई मतलूबा जगह पे, गेंद मिल गई थी और अच्छा कनेक्शन हासिल किया, आगे से गेंद को पकड़ा और फील्डर को बीट करने में कामयाब हुए। इस तरह की शॉट्स खेलनी पड़ेगी, लेकिन जैसे पिछले ओवर में हमने देखा कि सिंगल डबल्स पे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया था, जिसकी वजह से बल्लेबाज पे थोड़ा सा प्रेशर आना शुरू हो गया। अब कुछ शिफ्ट हो रहा है मोमेंटम ATF सदर्न पंजाब की जानिब। शुएब मलिक जो हैं वो जो ही चौका लगा कासिम अकरम के पास पहुंच गए उनकी मदद करने के लिए। शॉट को रिपीट करना चाहा लेकिन गेंद ज्यादा आगे पिच हुई। लेफ्ट हैंडर इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि सेटल ना होने दिया जाए कासिम अकरम को और अपनी टीम पर जो जमूद तारी है उसको तोड़ा जाए। लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ भी, कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन फिर पिच पर पूरी तरह थे नहीं यूसुफ। मुश्किल हो जाती है स्पेशली स्पिनर्स के लिए जब एक बल्लेबाज रिवर्स खेलना जानता हो, स्वीप खेलना जानता हो, कदमों का इस्तेमाल करे। इस पर कोशिश इनकी थी कि सीधा शॉट मारें लेकिन पिच पे नहीं पहुंचे, जैसे आपने बोला, ऐसा लेट भी हो गए थे। यहाँ ओवेन मॉर्गन जो हैं उनको देखकर जितने भी लेफ्ट हैंडर्स हैं ये उन्होंने गुर सीखे हैं बैटिंग के नए नए और स्पिनर को परेशान करने के। वो पहले रिवर्स स्वीप करते थे। ये बड़ा शॉट है, सनसनीखेज हिट लगाई और गेंद ऑल द वे आई फार एंड इमारत के बिल्कुल सामने और ये बहुत बड़ा छक्का लगा दिया शारून ने। तो ये दोनों बैट्समैन अब बैटिंग का महाज गरमाने लगे। बहुत जल्दी पिक कर लिया था लेंथ को, अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया, सीधा निकले, उसके बाद हल्का सा रूम लिया और अपने हुनर
का अब डिस्प्ले करना शुरू कर दिया शरून ने। इनकी बहुत अहमियत है इस बैटिंग लाइनअप में। खास बात ये थी कि ये विद द स्पिन इस गेंद को उठाने में कामयाब हुए। इस टीम में सबसे अच्छा खेलते हैं स्पिन बॉलिंग को शारून सिराज। ये बल्कि इस टूर्नामेंट में मिडिल ऑर्डर में जिन खिलाड़ियों ने स्पिन के सामने अपनी महारत दिखाई है उनमें से ये बेहतरीन रहे। पाकिस्तान में जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग का एक दुखती रग है स्पिन को खेलना मिडिल ओवर्स में। इतना आसान काम है नहीं। इस पर मरीना की भी हम राय लेंगे अगले ओवर में। 14 के बाद 74 पर 4। पहली विकेट आज 2 के स्कोर पर गिरी। पिछले मैच में उमर सिद्दीक ने बड़ी उम्दा बैटिंग की थी लेकिन इस बार गेंद को वो नीचे नहीं रख सके। सुहेब मकसूद भी जल्दी आए और गए और इसके बाद कप्तान सलमान अली आगा उनकी नाकामियों का सिलसिला आगे बढ़ता गया। ये जैन अब्बास से 25 रन बनाकर तैयब ताहिर के हाथों आउट हुए। फैजान ने उनकी विकेट हासिल की। ज्यादा तसलसल नजर नहीं आया आज एटीएफ सदर पंजाब की बैटिंग लाइनअप में। शरून सिराज और यूसुफ बाबर पे काफी जिम्मेदारी आयद है। इमरान रंधावा, हसन खान ये जरूर बैटिंग कर सकते हैं लेकिन एक डिसेंट टोटल तक पहुंचने के लिए इन्हें अप्रोच अपनी बदलनी पड़ेगी। स्पिनर्स की जिस तरह से पिटाई हुई है उसके बाद मजबूर हो गए कासिम अकरम वकास मकसूद को वापस लाने पे। उनका मंसूबा यही होता है आमतौर पर कि इनके 2 ओवर्स जो हैं आखिर के लिए बचाए जाएं। अच्छे यॉर्कर्स ये करते हैं। फिनिशर हैं बॉलिंग में वकास मकसूद। स्क्वायर ऑफ द विकेट और अनबिलीवेबल कैच। कासिम अकरम ने डाइव की और लो कैच ले लिया। शारून जिन्होंने स्क्वायर ड्राइव किया था उनको जाना होगा और ऐसे कैचेस आपको मैचेस जितवाते हैं। इस विकेट का जो ताज है वो बिल्कुल कासिम अकरम के सर पे सजना चाहिए। आउटसाइड ऑफ स्टंप शॉट जरूर अटेम्प्ट करनी थी। गेंदा काफी दूर था लेकिन ये शानदार कैच। कासिम अकरम ने पहले भी एक बहुत अच्छा कैच लिया था उमर सिद्दीक का लेकिन ये बेहतरीन कैच था और अपनी किस्मत का यकीन नहीं कर पाए। शरून सिराज एक बड़ा झटका एटीएफ सदर्न पंजाब को 21 बना के वापस। 74 पे 5 एटीएफ सदर्न पंजाब। शाहिद अनवर जो हैं इस वक्त परेशान कोच हैं एटीएफ सदर्न पंजाब के। मरीना इकबाल के भी ये कोच रह चुके हैं। पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेटर्स जो हैं एक ज़माने में उनके साथ भी इनकी वाबस्तगी रही है। ये नौजवान क्रिकेटर्स के लिए अच्छे कोच समझे जाते हैं। नई टीम बनाने में इन्होंने सेंट्रल पंजाब की भी नई टीम बनाई थी और वो चैंपियन बनी थी जब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में पहली बार उसने शिरकत की। हसन खान आए हैं नंबर 7 बैट्समैन। पार्टनरशिप जरूर बन रही थी शरून और यूसुफ के दरमियान लेकिन एक शानदार कैच कासिम अकरम का और अब वापस जिम्मेदारी जो है हसन खान और यूसुफ पे आ गई है एक बार फिर। आज बहुत स्ट्रगल किया है एटीएफ सदर्न पंजाब ने रन हासिल करने में।
एटीएफ सदर्न पंजाब की टीम जब दोनों बैट्समैन सर उठाने लगे थे तो विकेट गिरी, फिर गेंद जो है वो रुक कर आई है। देखिए उतना ज्यादा बाउंस नहीं हुई, लेकिन ये डाइव बर वक्त लगाई। ये इतना आसान कैच था नहीं जितना कासिम अकरम ने इससे बना दिया, क्योंकि अक्सर इस पोजीशन पर फील्डर को उस वक्त अंदाजा होता है जब गेंद आपके पास पहुंच चुकी होती है। लेकिन नजर बहुत तेज है, स्पेशलिस्ट फील्डर हैं कासिम अकरम इस पॉइंट के। आउटसाइड एज, थर्ड मैन के फील्डर पहुंच गए उसामा, बहुत ज्यादा वाइड नहीं थे। आउटसाइड ऑफ अक्सर हमने देखा है जब कोई गेंद जाता है बैटर को लगता है कि ये तो चौके वाली बॉल है, हाफ हार्टेड बैट थ्रो कर देते हैं। फिर मकसूद पे भी यही देखा, उमर सिद्दीक भी इसी गलती का शिकार हुए, और अब जिस तरह का अटेम्प्ट किया था शॉट, ट्रांसफर ऑफ वेट नहीं हुआ था, पीछे नी जो है वो कोलैप्स हो गई थी। शॉट्स खेलने को जरूर मिलती हैं, लेकिन एक्सिक्यूशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप सही शॉट खेलना चाहते हैं, ट्रांसफर ऑफ वेट ज़रूरी होता है, फुटवर्क अहमियत रखता है, चाहे आप कोई भी शॉट खेलें। यूसुफ बाबर के मूड को देखते हुए उंगलियों घुमा दिया गेंद की सीम पर वकास मकसूद ने। बहुत अरसे से ये क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और इनको अंदाजा है, देखिए पिच को बहुत अच्छा रीड करते हैं एक बॉलर के तौर पर। ये बड़ा नुकसान सदर्न पंजाब के लिए, ये वो खिलाड़ी थे जो आखिर तक जा सकते थे और स्कोर को पहुंचा सकते थे एक मोतबर हद तक। और जोरदार शॉट खेला, लॉन्ग ऑन पर फील्डर हैं लेकिन शोएब मलिक कुछ नहीं बिगाड़ सके। और दरअसल इरफान न्याजी थे जिन्होंने बहुत ज्यादा उछलकर इस गेंद को पाने की कोशिश की। एक लम्हे के लिए लगा था कि शायद पार नहीं कर पाएंगे बाउंड्री, क्योंकि मिडल नहीं कर पाए थे, लेकिन किस्मत इनकी अच्छी रही, कोशिश बहुत अच्छी थी। जिसे कहते हैं हल्का सा धक्का चाहिए था किस्मत का, और यूसुफ ने अपना छक्का हासिल किया। इन्हें जारी रखनी पड़ेगी इस तरह की बैटिंग, वरना 100 रन भी नहीं पार हो पाएंगे। अगर यहाँ पे बड़ा नुकसान होता है, इलियास जरूर मौजूद है बैटिंग के लिए, लेकिन ये वेल सेटल्ड इन है। पुल किया, लेकिन इस बार ये कैच आउट हो जाएंगे क्योंकि इस तरफ बाउंड्री का फासला बहुत ज्यादा है और यूसुफ ने उसकी परवाह किए बगैर शॉट खेल दिया। ये जवाबी हमला करना चाह रहे थे, विकेटें गिरने के बाद उस दबाव को कम करने की कोशिश की, लेकिन तैयब ताहिर को उन्होंने बाउंड्री पर पा लिया। आउटसाइड ऑफ स्टंप इसको फेच किया इन्होंने। अटेम्प्ट अच्छी थी लेकिन गैप नहीं हासिल कर पाए, सीधा फील्डर के हाथ में। 22 बनाकर वापस यूसुफ बाबर, 81 पे 6 एटीएफ सदर्न पंजाब। जो T20 बैटिंग का, मॉडर्न T20 बैटिंग का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको फॉलो करना चाह रहे थे यूसुफ बाबर कि विकेट की परवाह किए बगैर वो अपने शॉट खेलते चले जाएं, लेकिन उनको फील्डर मिले। ये खासी बड़ी बाउंड्री है, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा है और उसी की तैयारी के लिए यहाँ पर बाउंड्रीज का फासला बढ़ाया गया है और आपको शॉट जो है कुछ देखभाल कर खेलना पड़ते हैं। लेकिन वकास मकसूद ने दोनों ही सेट बैट्समैनों को
आउट कर दिया अपने ओवर में। राउंड को वापस लाने का फैसला कासिम अकरम का ये काम कर गया। एटीएफ सदर्न पंजाब जब भी बल्लेबाज सेट होना शुरू होते हैं, सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स उनकी विकेट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। शॉट अटेम्प्ट करना था इन्हें, गेंद भी मिल गई थी, लेंथ भी थी हिट मारने वाली, लेकिन अनलकी रहे। तैयब ताहिर एक बहुत शानदार फील्डर हैं। यहाँ 10वां कैच लिया तैयब ताहिर ने। इससे हम फील्ड पर भी इनकी अहमियत का अंदाजा कर सकते हैं। बड़े अच्छे कैचर हैं और साथ साथ स्टंप्स को हिट करते हैं। आज जितनी भी दूर खड़े हुए हों, तो एटीएफ सदर्न पंजाब को ये तो अंदाजा हो चुका है कि गेंद जो है इस पिच पर वो बल्ले पे आ नहीं रही और कई बार बहुत ज़्यादा रुक कर आ रही है। अगर यहाँ से भी वो 120, 125 की तरफ निकल जाते हैं तो कम से कम शुरू में विकेटें लेकर वो मुकाबले में रहेंगे। या फिर दूसरी सोच ही होनी चाहिए कि आप मार धाड़ करते रहें, हो सकता है कोई पार्टनरशिप क्लिक कर जाए। अप्रोच यही होनी चाहिए। लियास अभी मौजूद हैं डगआउट में, वो भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। किंगडम वैली, आप इनके फेसबुक ऑफिशियल पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपके पास एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का भरपूर चांस है। अपनी किस्मत आजमाए और आप अगले विनर हो सकते हैं। बहुत अच्छे शाबाश। मोहम्मद फैजान इस सेंट्रल पंजाब की टीम के लिए इनकी जो आमद थी वो तो एक बहुत ही अच्छा शगुन रहा। आकर वन डाउन पोजीशन पर पिंच हिटिंग करते रहे, बॉलिंग में भी विकेटें लेकर दी हैं, अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। इतना आसान है नहीं इनकी गेंदों पर हिट आउट करना। अच्छी लेंथ को हिट करते हैं ये, 3 डायमेंशनल क्रिकेटर हैं। और T20 की जब भी बात करें, ज्यादा यूटिलिटी प्लेयर्स को ही चूज किया जाता है अपनी प्लेइंग 11 में। कुछ परेशानी के बायस जरूर है एटीएफ सदर्न पंजाब का कैंप। मोहम्मद इलियास अगले आने वाले बल्लेबाज होंगे, इनको भी बहुत अच्छा कमबैक करते देखा इस टूर्नामेंट में। बहुत दूर से शॉट खेलने चले गए थे। बहुत अच्छा, गुड ओवर। एक रन इमरान को मिला इनसाइड एज पर। एक और अच्छा ओवर सेंट्रल पंजाब की जानिब से। 87 पर 6 एटीएफ सदर्न पंजाब। Six bowlers used by Central Punjab. 2 wickets for Amir Yameen, 2 for Waqas Maqsood. I think they've been the main destroyer in this inning. They bowled beautifully with that new ball. Hunain Shah has been the pick of bowlers. He's been a surprise package. He's got 1, and Faizan also taking 1 wicket. Last 4 overs, 87 for 6. ADF Southern Punjab hoping to get to that 150 mark. Pitching outside the leg. It's not going to be easy because Waqas Maqsood, we all know that. He's a seasoned campaigner, very experienced. He knows how to bowl in all the situations. Well, in all honesty, I tell you, they've dug a hole and they're sitting in it. Oh, I don't know if I should say I'm nobody to speak. Is it tough out there to bat? Doesn't seem like. Just, they're all capable of scoring runs. Zain, Sohaib Maqsood, Salman. It's in the air. It's just a short selection. Have a look at this. Another catch. Is Tayyab Tahir, is it? Yes, it is. It's just
no planning in setting a total. That's what it seems like. 7th wicket goes down with just 87 runs on board. Well, you can't blame these batters now because they had to go out after the bowling. They have to get those runs. The pressure was built early on when they started off the inning. And Randhawa had to go big, had to score runs. And as I said, Waqas Maqsood is too clever for this. They're still checking for the no ball. There was an earlier incident when Hunain Shah was very close of bowling a no ball. This time they're checking again, Waqas Maqsood. He's fine there, no problems. With that, Imran Randhawa walks out with 4 against his name, 87 for 7. Mohammad Ilyas comes out to bat. I think he's probably the most run scorer from their side, at least in recent times. And him and Hassan Khan will surely take the team to some 3 figures, hopefully. He's dropped his bat. Don't take it away from Central Punjab bowlers. They've worked. They worked well because they have figured out what to do, what to bowl against this particular batter. And it seems like they come out with a plan compared to their opposition. See, wide outside the off stump, make it difficult. It's coming around the wicket now. It's been a good batting touch, and now in this game he's been excellent with his catching. They're never easy. We saw yesterday Balochistan making a mess, but this boy, he's one of the finest catchers in Pakistan. Tayyib Tahir has got a strong arm also. Good fielder. Ilyas on the other side has not just been good with the ball, but with his batting and strike rate also. You know, it's actually an art. You bat first, you decide to bat first, you should know how to set a total. What works on a certain pitch. It's been so when we were in the Pindi leg, lots of teams, in fact mostly every team was deciding to chase because nobody knew how much is enough. Here teams are trying to bat first. But these 2 strips on the extreme left of the square have got bounce. But we haven't seen any extra bounce because the bowlers in operation aren't of that sort, because Waqas Maqsood is military medium pacing compared to some of the quicks we've seen like Ilyas. He's skiddy, won't go with the bounce. You might see Samin Gul getting some today, otherwise Amir Yamin is also skiddy. And there is Hunain. He's quick. You need someone who can hit the deck hard and test it out. These 2 batters for ATF Southern Punjab have scored runs for the side. We know Zain Abbas has been scoring runs for them, but 117 runs from Ilyas's bat and 63 from Hassan Khan's bat. So they are at number 3 and number 4 position in the top scorers of the side. Yeah, not just runs, but the strike rate has been very impressive by Ilyas. That has been the missing part up the order for Southern Punjab. In this game also, they put too much pressure on the later batters. That is the reason they are in this position, that the batter is now coming, they have to hit out, not giving them enough time to settle in. The coach there, Zishan Ashraf, dropped.
Samin Gul is probably the one coming next. Irfan Fazal also there, the fielding coach. This boy rather, has done a good job. They were struggling early on in the tournament, but they made a good comeback. The last game that they won, I think that would have given a lot of confidence to these Central boys. The good part is that they've not been shy of giving opportunities to the youngsters. See, now it's difficult. It's not that sort of a pitch that you'll come and start hitting away. You need a few deliveries. 17 gone, 91 for 7, ATF Southern Punjab. Good spell by Waqas, taking 3 wickets. He's been the pick of the bowlers, and since the time he has joined Central Punjab, they've looked different. This is what an experienced bowler does. And this has been a good fielding day for Central Punjab. Qasim Akram starting off with that brilliant catch, and this one, an excellent one. And then it was Tayyib Tahir. They're never easy when they go that up in the air. It's such a good, and he's suggesting that it was revolving. A job well done by Abdul Razak and the camp. Mai of Farat also there. Shot. Just a single there. Yeah, they pulled their socks up, Central Punjab. They've done well to come back. Self-belief has creeped in after beating KP. And now they're looking like a team with a purpose. And some minute changes in the batting order. SDICC T20 Champions Trophy, showcasing amongst the most talented deaf cricketers on the planet. And you can follow DICC for further updates from the 1st to the 9th of October. Oh, shot. That is a shot. And it has travelled 1.5 ground after the rope. Top order should learn from him. Mohammad Ilyas has been in tremendous batting touch. Have a look at that. That length delivery. Flat batted it. And he's got the power to take it all the way. They should have looked to promote him up the order the way he's batting in this tournament. Look at the distance outside the boundary. Don't go on these advertisement hoardings. The boundary is way inside that as well. There's a big distance that has been covered and travelled after the boundary line. Now, only these two can take them somewhere. They still have the number of deliveries available, around 16 of them. And then the worry has been Salman Ali Agha's form too. He's not scored runs. That is the reason they're struggling in this game. Making room, hitting hard. Finds the fielder. 99, and that changes to 100. ATF Southern Punjab 100 up in the 18th over. Now that is the slowest 100 that we have seen in this tournament. It's just taking them 17.3 deliveries. Wonder what they will be planning from here on. Hassan and Ilyas, they both have the potential to go big. We have already seen Ilyas hitting one out of the park. What can Hassan do? Direct hit. Nothing. And come back for the second. Another chance at the keeper's end. And completed. Very well done. Excellent cricket. Very good cricket by these two youngsters. Hassan and Ilyas. The opportunity was there. There was risk involved, but they were rewarded. Look at that. It went straight. If
If there was a direct throw, he would have been out by miles. But this is what happens when you take risks. You get an extra run. He's just pleading the throw at the other end. You might get a run-out chance there. What a fine cricketer this young lad is, Hassan Khan. Bowls well, fields brilliantly, and he can also have some useful runs down the order. He's been the captain for Pakistan under 19 too. Very handy cricketer. Gone. Slog, and it's gone straight into the stumps. Now that is what pace does. Rattles the stumps. And Ensha, we know that he is quick, and it is not a good idea to go like this on a pitch like this. He was searching for that length delivery, but it was too full to even try that shot. I don't blame him. He had to go big. He could only score 8 runs. It's 102 for 8, ATF Southern Punjab. Samin Gul comes out with 8 down at 102, ATF Southern Punjab. Still have 2 overs and a delivery left. In the stumps. Full, quick. That's more like it. Well played. End of the over with that single. And it's 12 of it, 103 for 8. That was Hassan Khan, the last wicket, wicket number 8. Samin Gul took a single of the last delivery, so he'll be on strike. Good bowling from young Hunain Shah. Giving strike to Ilyas, rightly so, on the first delivery. Amir Amin into his 4th over. Just 14 runs, 2 wickets early on. Swung the ball early on, and we've seen that this pitch has assisted these fast bowlers. That is why we haven't seen Ali Asfand even for 1 over. The left arm spinner, because this pitch has a little more bounce than we have witnessed. Yesterday's pitch was a little skiddy one. This one has a little more bounce. That is what they're enjoying, these fast bowlers. Appeal, but the umpire says, oh. First he nodded his head, did he? He's given out. I thought the bat brushed the turf. Faisal Afri, these nod of the head from this distance look like no. I think it all happened at the same time. The bat hitting the turf and the ball hitting the bat. I believe it's a good decision. He didn't like it, and rightly so. Nobody likes it. He scored 8 runs. It's 104 for 9.
He's had a good day, Amir Yamin. Not with the new ball, also taking wicket with the old one. And now it's all up to Ali Majid Shah. Just don't get bowled out. Play out these remaining 10 deliveries. You might get 10-15 runs. And we've seen those small targets can get very difficult to chase. Idea's right. Ball it into the stumps. Bowling to number 10, 11. And that's the last wicket. It all happened at the same time. Although Ilyas did try his very best to fool umpire, but Afridi is a very good umpire. He was surprised. Look at him. Oh, misfield. Ali Asman there. Sitting on the ball, just goes through him. Probably still thinking that I've not been bowled in this match. Ali Asman, left arm spinner, just took his eyes off the ball. 3 runs of this 19th over for Amir Yamin, alongside a wicket. It's a good end to his spell. Still 2 deliveries to go though. Just making sure that every fielder is at the right place. Nice, I like that full face of the bat. All the time in the world. I mean, what are you talking about? Pace, not a problem. Trust me, you go to number 8, 9, 10 batters, there's none of them who doesn't enjoy batting. They love batting. And they shadow practice the most. Nice wrist work. Just opening the face. It's well done. 19 gone. 106 for 9. Ali Asman gets the 20th over. He hasn't bowled. Wasn't required. So 1 over of left arm spin. You have Samin Gul on strike. 6 balls to go. 6 sixes will take them to 142. He tried though, probably heard you, but those batting skills not quite there. Gone. Saw him coming down, dropped it short. The boy gets a wicket on his second delivery, and 80 of Southern Punjab have been wrapped up and parcelled. We're 106 all out in 19.2 overs. Revenge taken from Central Punjab, Southern Punjab. They bowled them out on 79 the last time they played, and this is the lowest total in the first inning in this tournament. 106. They've been bowled out inside 20 overs. They've been brilliant with their planning strategy. That intent from the ball one was just too good. They meant business. They were in to win this game. Job is half done. This is the
lowest total since the new system has been introduced of the associations playing. All out at regular intervals. In form, Zain Abbas open with Umar Siddiq, and catching has been brilliant today. This one again, Suhaib Maqsood going hard at the ball. A few runs came in the power play. It was the slowest and the lowest power play by any team, 29 for 3. That's how they finished the 6 overs. Wickets were coming, some shots were played, but there's a lot of hesitance from the batters. This was the captain, Salman, was given out leg before, and then Zain trying to go for the big one. The ball getting big on him. Good catching, Tayyib Tahir there. And then from here on, it was just about a few misfields, a boundary here and there a wicket. So whenever they looked like they're forming a partnership, they lost a wicket. And Waqas Maqsood was good. This was a brilliant catch by Qasim Akram. Waqas has been bowling well. He's understood what works here. So with the limitations around in terms of pace, he's bowled in the good areas. You're bound to get hit for 1 or 2, but then these boundaries are very, very big. You have to be very sure. This was again another good catch. Imran Randhawa trying to clear, and Tayyib Tahir once again running backwards. This was a big hit from Ilyas. Massive hit. Then Hunain took his revenge from Hassan. And this was Ilyas's wicket. Amir Yamin getting amongst wickets. This is the last few moments of the innings. And in the end, Samin Gul was out to Ali Asman. The only over he bowled, in fact, the only 2 deliveries he bowled today. 106 all out.
Central Punjab appended 80th Southern Punjab. They had no momentum at all. Just managed to put 106 on board. Not a shouldn't be a problem for Central Punjab. It is a difficult surface, but not that you cannot chase 106. 80th Southern Punjab will have to bowl exceptionally well. Field as well to make things a little bit challenging for Central Punjab. Mohammad Faizan has been really good with the bat. He loves to come out, display his stroke play. Has been a good addition to Central Punjab's batting lineup. The skipper has promoted himself up. Qasim Akram, on the other hand, he'll be delighted the way Central Punjab bowled. Now on to the second innings. Look at that strike rate, 140. He's the key for early breakthroughs for 80th Southern Punjab. Ali Majid, can he create some ripples? तेजी आएगा ना एक देख लें ठीक है जी बैठा ओवर लेट्स प्ले 3 runs straight away. Just straying down the leg side. They'll be wide. And a boundary. Not a good start at all. He always looking to target those stumps, but this time the execution, the finish of the line wasn't good. They're off and running. It's not a bad idea to come up the order as a captain if you are looking for runs, a good start. This could be good batting practice since you're not chasing a big total, but you don't want to mess it up. 80th Southern Punjab knows very well that they need 10 wickets. Nothing doing. Cannot defend this in 20 overs. If you want to really make Central Punjab breathe heavily, get Faizan out now. Not this way. Umpire shows the brother has had good exercise today. Been quite a few wides, no balls. Gets that swing when he balls seam up, and he just bowls that delivery, especially when he's got the new ball in hand. I asked him, does he enjoy the new ball more or in the death overs? See that ball tipping in. Well, he says he enjoys everything, whatever the captain says. Well, you have to say that. He's more like a medium pacer and in swinging. At times the seam up deliveries, the drift he gets, skids on very quickly. Doesn't allow much time to the batter. It's a good ploy to attack the stumps, but probably would love to finish on off stump and middle. Just erring a little bit on the leg side.
Ball is curving into the right-handers. We can get one to move away because he's setting them up. That'll be something. Got to put everything in your arsenal into the game today. You see there, quicker one, cut away for boundary. Yeah, margin of error is very, very slim. 11 for no loss. Thank you, sir. Qasim Akram managed to get a boundary. Yeah, it did kept his line, just straightening a little bit, but was wide outside. And the length actually helped Qasim to put bat to it. Interested to see what kind of bounce can Samin Gul extract here. We've been talking about it. He'll get the ball to swing as well. Oh, that's a good shot. That's your value for shots that you get on this pitch. I don't know why it was missing when 80 of Southern Punjab was batting. That's a great shot from Faizan. He loves to go after the bowlers, just leaning in, timed it so perfectly. It raced away to the boundary. The extra cover fielder was very close in, couldn't really cut it off. Pierce that gap. He's not happy. You have to wait for the ball to come closer to you. You will get runs. It's just shot selection and approach. That's the one Samin Gul balls that comes in to the right-hander. The first ball, rightly said, had a lot of width to it. Happy days. They've done well in the last two games, this one included. Can they win all their remaining games and get to 10 points? Courtesy those losses, there is no looking back for them now. They can keep playing like this. Also, if they can win all the games and get to 10 points, this is a great opportunity to get a better net run rate. You dismiss the opposition around 100, score it quickly. There's a heavy chance any two teams can land up at the same points, and then that will decide the semi-finals positions on the net run rate. Yeah, the tournament is getting interesting as the game proceeds. Faizan, we've talked about him a lot. He's a very expressive batter, bottom-handed. He's really good against spinners and paces as well. That jab, a very brilliant shot of him. And he loves to take responsibility. That's a good ball. That's a very good ball and will be rewarded. That's the one that curves in. You need that, ATF Southern Punjab. You've got Faizan. Now we're talking. Perfect delivery from Samin Gul. Perfect length. Just nip back sharply. And he had no clue how to handle that. Asif Afridi, no worries there. Faisal Afridi raising the finger. First one down and it's a big wicket. Mohammad Faizan has to take the walk. Central Punjab 17 for 1.
Mohammad Akhlaq. First one down for Central Punjab, the big one. There are some cracks on the surface. When you hit them, you can get some unexpected movement. And probably that happened with the previous delivery. If they can manage to get another wicket, things can turn around for ATF Southern Punjab. No, that's not bad. You're looking for form, why not just hit your way out into it? No regard whatsoever. He didn't care about what happened on the previous delivery. He saw the length, he went for it. That is brute force. One way to handle it. He's been struggling. He's got 22 runs in 4 innings. So yeah, hit your way out back to form. They need you in the games that are to come. And this is a great opportunity because you're not chasing a huge total. He too needs runs. He's also had not a very good tournament with the bat. Change of pace there. End of the over. 21 for 1. It's the front foot going cross. And he had no time and no space to handle that in swing. Couldn't believe it. That's his tendency. He does go across the line. It was a brilliant delivery. 21 for 1 Central after 2. This is what I was talking about, Marina. So Central Punjab is down at number whatever 6, but look at their net run rate, minus 0.63. Inside edge, runs again. My point was that even Central Punjab wins this game, they will remain at number 6 unless they score this in 10 overs. Now, I'm not saying score it in 10 overs, but get them as quickly as possible so their net run rate gets a little healthier. Eventually, when you land up with the same points with another team, then you can look at your net run rate. And you don't really get these opportunities time and again when an opposition just scores 100 runs. Because these low targets can always be tricky. But what the chasing team needs to do is not walk into a shell. It doesn't matter if they've lost one. They've got plenty of batting. It's not a big target. Just keep that positive approach. It doesn't matter whatever you're doing. It's good cricket, just treating strike of Ali Majid. He'll bring everything back into you. Play with a straighter bat. Every now and then a loose delivery will be offered. Just capitalize on that one. They'll get plenty of options in terms of bowling, where they can attack and put that accelerator down. It's gaining confidence back, that's all what Central Punjab needs. Must be disappointed, couldn't really find the gap. It was there to be hit. So far, a couple of dot balls. कोई नहीं रहेगा आराम से 26 for 1 after 3.
Sun is setting down here in Multan. Day-night games. Next one is KP versus Sindh. Here we've had a low-scoring game. 107 the target. The lowest total since 2019 by any team in the national T20. And as the sun sets down, people finish their day's work. They come and watch some good cricket. Swing and a miss. Sameen Gul is a good bowler, but the problem is the AT of Southern Punjab batters have not given anything for the bowlers to bowl at. Yeah, he's making the ball talk. Getting some movement, enough movement though. Just a wild swing. Probably would love to come a little more within the stumps. Inch or two. They need to make things happen. They cannot just wait for Central Punjab to commit mistakes. I wanted him to come within the stumps, but not like this. Getting some shape. Central Punjab. It's not a hard task, but again, how they approach this will say a lot. Backed offside. Got shot mid-wicket. Square leg. 45. The time has just run out for the teams to be experimenting. 7 or 8 games each side has played. Maximum will be 10 in the round. So now it's all about getting your best game plan to the stadium. Because a loss here now will surely take you far away from the semi-final stage. May that be any team. Why the doors are opening up for the bottom teams is because teams like KP have lost 2 games back-to-back suddenly. Balochistan have lost. That's played high in the air, but that will clear everything. Akhlaq can do this, but can he do it consistently? Good shot, that. Yeah, he knew where Sameen Gul will be bowling. The length within the stumps. Just the swing coming in, and he fetched it way in front of his eyes. That's why he found a good connection, good stable base. He'll go after everything. That's the sort of batter he is. Just a slight shuffle, good hands, follow through. Everything perfect and perfect result for him. Short ball pulled away, and that will get them at least 2. Oh, just 1. That's strange. Not good running at all. There are always 2 whenever the ball travels to the boundary. Big square. The fielder had to go a few yards into his left. And look at that. He was on the back foot. Had ample time to push hard for the second one. Yeah, you surely get a run on the throw. Like you said, big boundary square of the wicket. Inside edge. Yeah, surely an inside edge. We heard a sound and it's high, he says. It was a good call, but turned. Again, that nip back. Oh. Faisal Afridi is not interested. He's signaling the height. Nonetheless, that's the final word. He's been really decent, Sameen Gul. He's getting the help. Just not the luck on his side. Few brilliant deliveries.
Dot ball, 4 overs gone, 35 for 1. मसनूई रोशनियां यहाँ ऑन कर दी गई हैं। आज मतलब बिल्कुल साफ है। पिछले 1-2 दिन यहाँ पर बादलों के आसार रहे, गर्द का तूफान भी आया था परसों, जिसमें सदर्न पंजाब की टीम ने कामयाबी हासिल की थी। 5-5 ओवर्स तक उस मैच को महदूद कर दिया गया। मोहम्मद इलियास जो हैं, इनको पहले लाया जा सकता था। ये सेंट से जो अली बॉलिंग कर रहे थे उनसे भी पहले, क्योंकि अब तक जो 11 विकेटें गिरी हैं इस मुकाबले में, उसमें से 10 फास्ट बॉलर ने हासिल की हैं। सेंट्रल पंजाब के जो फास्ट बॉलर्स थे, उन्होंने नई गेंद पर पावर प्ले में ही 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया था। उठाकर खेला, ये कमजोर शॉट था, लेकिन इतना नहीं कि मिड ऑफ को क्लियर ना कर सके और 4 रन पा गए। यहां मोहम्मद अखलाक, उनको एक लंबी इनिंग्स की जरूरत है और इस वक्त पावर प्ले का फायदा उठाने के मूड में। बिल्कुल कनेक्शन बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच से तो नहीं था, लेकिन पावर प्ले है, मिड ऑफ को फील्डर ऊपर था। अखलाक की जो इंटेंट है बॉल 1 से आज नजर आई। काफी बुझे रहे हैं इस टूर्नामेंट में। आज शायद उन्होंने फैसला किया है कि वो इतनी अपनी मुश्किलात का इख्तिताम जो है वो हिट आउट करके करेंगे, और अभी तक 6 गेंदों पर 16 रन बना चुके हैं। से स्मैश किया, लेकिन रन एक ही मिलेगा। अलबत्ता एक गेंद को मिडल करने में कामयाब हुए। अच्छी आवाज आई उनके बल्ले के ब्लेड से। ये एक हिकमत अमली होती है, जब आप प्रेशर में हो और जब आप बिल्कुल दीवार से लग चुके हों, फिर आप फैसला करते हैं कि आज आ या पार, और इसी मेंटालिटी के साथ आज आए हैं अखलाक। क्योंकि उस वक्त आप को ये भी एहसास हो जाता है कि इससे बुरा हो नहीं सकता मेरे साथ, तो आइंदा जो कुछ होगा वो इससे बेहतर ही होगा। ये गेंद नीचे रही है और आज ऐसा पहली बार नहीं हुआ। ये गेंद जो है एक टिपे पर विकेट कीपर तक पहुंची हो। ये 2 पेस सी पिच लगी है, कल खासा बाउंस सा पेस सी। देखिए गेंद सीम पर लगी, इसके बावजूद स्टंप्स को छुए बगैर निकल गई। अच्छी सीम मूवमेंट भी देखने में मिली है इस पिच पर, और कह सकते हैं कि थोड़ा सा धोखा हुआ सबको ही, क्योंकि ज्यादा बाउंस की तवक्को थी इस पिच पर। ये आप कह सकते हैं कि इस मैच में जिन बॉलर्स ने बॉलिंग की है वो ज्यादा तवील कामत के नहीं थे और स्किडी बॉलर्स थे, लेकिन फिर भी उतना बाउंस नहीं मिला। एलबीडब्ल्यू अंपायर ने सोचा जरूर, लेकिन ये गेंद जो है लेग स्टंप को छोड़ती हुई निकल जाती। या फिर बल्ला भी लगा था, लेकिन ये दिलचस्प फैसला है। अगर ये बल्ला नहीं लगा था तो कासिम अकरम इनको मुश्किल में आना चाहिए था। ये 2 ओवर में दूसरी बड़ी क्लोज एलबीडब्ल्यू की शॉट हुई। पिछले ओवर में समीन गुल अखलाक के खिलाफ काफी जोरदार अपील थी, और अभी भी दोबारा देख सकते हैं इसे। इस बार फिर टाइम करने से कासिर रहे, अलबत्ता स्ट्राइक से हटने में कामयाब हुए कासिम अकरम। ये भी अच्छा जारहाना फैसला था कि खुद ओपन करने के लिए आ गए। जिस एलबीडब्ल्यू अपील का जिक्र कर रहे थे, बॉल वो भी थोड़ा सा नीचे रहा, एंगल के साथ नीचे जा रही थी। क्या लेग स्टंप को हिट कर जाती? लगा तो ऐसा ही कि शायद बहुत क्लोज था मामला। या खासी नीचे लगी थी ये इनके पैड के, और 50-50 डिसीजन था। और इस बार नहीं,
इस बार अपील करने की भी जरूरत नहीं, गेंद नीचे रही इनसाइड एज और उसके बाद स्टंप्स पर जाकर लगी। मोहम्मद इलियास को अच्छी बॉलिंग करने का सिला मिल गया उनके पहले ही ओवर के खात्मे पर। लाख के आउट होने से इलियास की आंखों में जो गुस्सा था वो नजर आ रहा है। वो ये समझते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, इंसाफ हुआ, चाहे एक बॉल के बाद ही हुआ। सुहेब मकसूद और एटीएफ सदर्न पंजाब की टीम काफी एनिमेटेड है। इखलाक का ये वार खाली गया, 17 रन बनाए सेंट्रल पंजाब 41 पर 2। सेंट्रल पंजाब की बैटिंग का ज्यादातर दारोमदार तैयब ताहिर पर ही रहा है और अब मिडिल ऑर्डर में वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 50 की औसत है इनका। T20 करियर ये बहुत ही रोशन रहा है। 142 का स्ट्राइक रेट है और इस पर नजर रखने की जरूरत है। हालांकि अभी 14वां ही मैच है, लेकिन पिछले टूर्नामेंट में सदर्न पंजाब के लिए खेलते हुए रन बना रहे थे और हवा में रही, फिर पहले खेल गए थे। आसान नहीं है बैटिंग करना इस विकेट पर। इस मुकाबले में काफी गर्मा गर्मी अभी भी मौजूद है। इनसाइड एज लगा, इखलाक का सर बहुत जल्दी उठ गया था और उसके बाद जो इलियास का रिएक्शन था आप देख सकते हैं। थोड़ा सा लापरवाही इससे शॉट खेला, आड़े हाथों लेना चाहते थे, लेकिन इस तरह के पिच में जब तक आप गेंद की लाइन में नहीं आएंगे आप शॉट नहीं खेल सकते। यही है, जल्दी करनी पड़ी और इतनी मुश्किल हो रही है सेंट्रल पंजाब को, खासतौर पर इलियास के ओवर के बाद से, एक एक रन बनाना जो है उसके बारे में भी सोचना पड़ रहा है कि अगला रन आएगा कहां से। इसीलिए तारिक, जब आप कमेंट्री स्टंट के आगाज में आपने बात की कि काफी हैरानकुन था कि इलियास को जल्दी लाना चाहिए था। ये रन ऐसे नहीं हैं कि आप अपने मेन बॉलर्स को आखिर तक बचा कर रखें, शायद उतनी नौबत ही ना आए। तैयब ताहिर का टूर्नामेंट बहुत ही आला रहा है। निस सेंचुरी, बैक टू बैक निस सेंचुरीज के साथ आगाज किया और दरमियान में 56 रन की इनिंग खेली और पिछले मैच में 78 रन की। और इस कारकर्दगी को हम इसलिए भी काबिल कदर कहेंगे कि ये कमजोर बैटिंग लाइनअप में उन्होंने अपने जौहर दिखाए, जो आसान होता नहीं है। सामने जब आपके मुसलसल विकेटें गिरती रही हूं और रावलपिंडी की पिच भी वो इतना आसान नहीं था, वहां हर हमाशमा ने रन बनाए नहीं है। जो अच्छे क्रिकेटर थे, जिन टेक्निक बेहतर थी, वही वहां पर निखर कर सामने आए। जिस तरह के अली इमरान थे नॉर्दर्न के, अब्दुल रज़ाक आए खुश होंगे। टूर्नामेंट में अच्छा कमबैक सेंट्रल पंजाब के लिए, अगर ये 2 पॉइंट्स हासिल करते हैं तो टूर्नामेंट बिल्कुल वाइड ओपन हो जाएगा तमाम 6 की 6 टीम्स के लिए। एक वाइड स्लिप ले रखी है, गली के करीब करीब है, रन बन जाएगा। विकेट की तलाश में है सलमान अली आगा। थोड़ी अनयूजुअल कैचिंग पोजीशन है, लेकिन फिर भी उम्मीद पे हैं कि एज अगर लगा तो वो थोड़ा थिक एज होगा और वहां जाएगा। किंगडम वैली के आप ऑफिशियल पेज पर जाइए, ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, और इनामात हासिल करने का आपको मौका मिल सकता है। अगले विनर आप भी हो सकते हैं किंगडम वैली प्राइस के। तो अभी आप जो जिक्र कर रहे थे कि
बोल्ड हो गए, एक बार फिर अक्रॉस द लाइन खेलने के लिए गए। कासिम अकरम ने बड़ा कमजोर और गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला और अपनी मिडल स्टंप से हाथ धो बैठे समीन गुल, उनकी जय जय हो गई और साथ साथ एटीएफ सदर्न पंजाब की भी। जी बिल्कुल, ये मुकाबला बिल्कुल अभी जानदार है। बिल्कुल स्लॉग कर गए, अपनी शेप नहीं रख सके, बैलेंस भी बरकरार नहीं रख सके। सर हवा में था जब बॉल उनके करीब पहुंची। एटीएफ सदर्न पंजाब गेम में वापस आते हुए 43-3। ये बैट्समैन का दिन रहा नहीं आज मुल्तान में। कोई भी जो बैट्समैन है दोनों टीमों से वो 30 के पेटे में नहीं आ सका। शोएब मलिक जो है ये वैसे खुद तो ये 40 के पेटे में है, लेकिन यहाँ ये देखिए ये मिडल स्टंप जो है ये बिल्कुल तहस नहस करके रख दी और इससे खराब शॉट हो नहीं सकता था किसी भी कप्तान की जानिब से। ये जेब नहीं देता कासिम अकरम जैसे अच्छे खिलाड़ी को। एक मौके पर ऐसा लगा कि शायद सेंट्रल पंजाब इस प्लान के साथ आई है कि 107 का हदफ जल्दी से जल्दी अबूर कर लें ताकि नेट रन रेट में बाकी टीमों को पीछे छोड़ दें जितना टेबल क्लोज है। लेकिन क्या अब ये 2-3 विकेटें ऊपर नीचे गिरने से यही हिकमत अमली जारी रखेंगे? स्लिप पोजीशन में आ गई है समीन गुल के लिए। इन स्विंग बॉलर जो हैं उनको खेलना और मुश्किल हो रहा है इस पिच पर, खास तौर पर अगर आपकी टेक्निक में झोल है। सिर्फ 2 रन समीन गुल ने दिए, उनकी शानदार बॉलिंग 43-3। सेंटर 107 रन के हदफ का पीछा कर रही है इस वक्त सेंट्रल पंजाब और उनके 3 खिलाड़ी आउट हुए। 41 रन पर एक ही विकेट गिरी हुई थी, लेकिन पिछले 2 रन में जो 2 बैट्समैन आउट हुए मोहम्मद अखलाक और कासिम अकरम, उसके बाद से एक उम्मीद लग गई है एटीएफ सदर्न पंजाब को। उन्हें होम क्राउड की भी यहाँ पर उनको सपोर्ट है। अच्छा फ्लिक शॉट खेला, गेंद गैप में चली है। 2 फील्डर माइल हुए थे, लेकिन ये बड़ा आला गैप ढूंढ निकाला और यही खासियत और खूबी है तैयब ताहिर की। उनका पहला चौका। ज्यादा बड़ी बैकलिफ्ट नहीं होती तैयब ताहिर की। ये देखें पंछी स्ट्रोक, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया। थोड़ा सा लाइन में चूक गए इलियास, ज्यादा लेग स्टंप की तरफ निकल गए, लेकिन 2 स्वीपर मौजूद थे, उनके बीचों बीच खेल गए। तैयब ताहिर अच्छी फॉर्म में है और फॉर्म को कैश करा रहे हैं। दोनों ही टीमों ने पावर प्ले में 3-3 विकेटें गंवाई।
फैजान थे लेग स्टंप के बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर, उन्हें चौके मिले और उसके बाद एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। बड़ी तेजी के साथ आई निपिंग किया और उसके बाद 2 खराब शॉट बैक टू बैक 2 ओवर्स में और 2 विकेटों से हाथ धोना पड़ा सेंट्रल को। यहाँ जिक्र चला था कि इलियास को जल्दी लाना चाहिए था और पाकिस्तान क्रिकेट में एक जो खुशगवार तब्दीली हमने महसूस की इस शारजा के टूर्नामेंट से कि दोनों एंड्स पर नई गेंद पर फास्ट बॉलर्स जो हैं वो कामयाब नजर आए बड़े अरसे के बाद। और वो जो एक दौर चला था जिसमें पाकिस्तान किसी फिंगर स्पिनर से ज़रूरी ख्याल करता था कुछ ओवर कराना नई गेंद पर, शायद उस दौर से अब पाकिस्तान बाहर आ गया है और ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। जी बिल्कुल, ये शोएब मलिक हैं, 72 सेंचुरियां बना चुके हैं। जी तारिक, एक खेप है फास्ट बॉलर्स की जिसने हलचल मचा दी पूरी दुनिया में इस एशिया कप में। उनका चर्चा रहा पूरे टूर्नामेंट में, फाइनल में भी जो आगाज उन्होंने दिया पाकिस्तान को बहुत ही खुशाइन था। आप बात करें तो शाहीन अभी अनफिट थे, लेकिन जिस तरह नसीम शाह ने स्टेप अप किया, हारिस रऊफ, हसनैन, ये तीनों ही बॉलर्स 150 से ज्यादा की सलाहियत रखते हैं गेंद करने की और तीनों काफी यंग हैं। शाहीन को भी इस खेप में मिला लें और धानी को भी, कम उम्र के बहुत ही जानदार और शानदार फास्ट बॉलर आ गए हैं पाकिस्तान के पास। जी हाँ, और क्योंकि अब ये जो बॉलर हैं ये 20 के आसपास पहुंच रहे हैं, हारिस रऊफ की उम्र निस्बतन दूसरों से ज्यादा है, लेकिन हारिस रऊफ ने क्योंकि देर से हार्ड बॉल के साथ क्रिकेट शुरू की थी तो उनको भी कुछ वक्त लगा है। लेकिन अब जिस तरह उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ पे कंट्रोल रखा है और जिस तरह का वो खतरा बने हैं दीगर टीमों के लिए, हम कह सकते हैं कि उस मकाम पर हारिस तकरीबन पहुंच चुके हैं और जो बाकी बॉलर्स हैं उनकी फिटनेस ज़्यादा बेहतर हुई। नसीम शाह या हसनैन, इनके टैलेंट पर कभी भी किसी का शुबा नहीं था, सिर्फ फिटनेस के मसाइल थे, रिदम के मसाइल थे जो अब हल होते हुए नजर आ रहे हैं। हसनैन की आपने बात की जो अपना एक्शन रीमॉडल करके आए हैं, उसके बाद तो लगा कि ओवरऑल जो उनके एक्शन में कभी और भी माइनर सी ट्वीक्स थी वो करके आए हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा रिदम में लगे वो भी, जो कि बहुत खुशाइंद है क्योंकि हसनैन पे भी पाकिस्तान क्रिकेट की काफी इन्वेस्टमेंट है। बहुत ही अर्ली, जल्दी उम्र में उनको पिक कर लिया गया था, आइडेंटिफाई कर लिया गया था। और जो मैं बात कर रहा था, दुनिया में जो हलचल इस वक्त मची हुई है वो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की है और इस डोमेस्टिक सीन पे भी कोई एक शोबा आपको ऐसा लगता है जिसमें वसाइल से माला माल है पाकिस्तान की टीम, तो वो फास्ट बॉलिंग ही है। 7 के बाद 51 पर 3। बहुत ज़्यादा बैटिंग नहीं रह गई क्योंकि इसके बाद बॉलर्स आएंगे। आमिर यामीन ज़रूर हाथ बटा सकते हैं, इरफान न्याजी ये ऑलराउंडर हैं। बॉलर्स का दिन है लेकिन सीम हुई, आगे गिरी और उसके बाद ये मोहम्मद अखलाक और कासिम अकरम, इन्होंने अपनी जो विकेटें हैं ये तशरी में रख के पेश की फास्ट बॉलर्स को। सुलगता सूरज अब जा लगा है बिल्कुल मगरिब के किनारों से और दिन की रोशनी बतदरीज कम हो रही है। तकरीबन 6:15 बजे के बाद 6:23 तक सूरज जो है मुकम्मल तौर पर गुरूब हो जाता है मुल्तान में। तो ये 4 रन ये तशरी में रखकर पेश किए अली माजिद ने
ज्यादा फुल लेंथ गेंद करने के लिए गए और सिर्फ इसका रुख मोड़ दिया तैयब ताहिर ने, उनका दूसरा चौका। एक बिल्कुल आसान बॉल थी, एंगल से भी बाहर की जानिब जा रही थी और फील्डर भी ऊपर था यहाँ पे। तैयब ताहिर बिल्कुल खुशदिली से ऐसा तोहफा कबूल करेंगे। क्लोज स्कोरिंग मैच में महंगे रहे हैं अली माजिद। पहले से बैकफुट पर थे और आला शॉट खेला मिड विकेट के पार। तैयब ताहिर वो हौसला दे रहे हैं सेंट्रल पंजाब के डग आउट को, और आप शॉट गेंद नहीं कर सकते। ये बैकफुट पर बहुत बुरी तरह पेश आते हैं पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को। जी देखिए, छोटे कद के हैं इसलिए पैरों पर काफी तेज हैं और ज्यादा बड़ी बैकलिफ्ट नहीं है, तो जो उनका फॉलो थ्रू है उसकी मदद से गेंद को के नीचे जाकर उठाने में आसानी होती है इन्हें। काफी जो के बाजू हैं वो ताकतवर हैं, उसका खूब इस्तेमाल किया। ये अली माजिद के बारे में ये शाह जी कहने दीजिएगा, पिछले मैच में ये मैन ऑफ द मैच हो गए थे, 3 इन्होंने विकेटें ली थी और क्योंकि अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। गेंद लगी है पैड पर, अंपायर का इशारा खासा दिलचस्प होगा। गेंद शायद बल्ले से टकरा गई थी इसलिए वो सवाल ही खत्म हो गया एलबीडब्ल्यू का। बल्ले से लगा और उसके बाद पिछले पैर को जाकर लगा। अगर बल्ला ना लगता तो ये काफी नजदीकी मामला हो सकता था। हम कह सकते हैं कि अली माजिद जो है इस मैच में थोड़ा सा ओवर ट्राई कर रहे हैं। पिछली बार क्योंकि मैन ऑफ द मैच थे तो अब उनसे तवक्कुआत भी हैं, वो भी एक दबाव हो जाता है। शोएब मलिक पार्टनरशिप के ख्वाहां हैं, उन्होंने अपना पहला रन बनाया और इसके साथ ही 8वां ओवर भी साइन ऑफ किया 63 पर 3। Yeah, comparison, if you look at it at this stage, I think there are similarities, but those big overs that Central got early in the inning, I think that can be the danger part for ADF Southern Punjab, because if you look at the comparison, those 3 early overs, it took so much time, and probably that has costed them a lot in this game. The situation is that Central Punjab need 44 runs off 72 deliveries. That's not a problem, but the wickets is because they've lost 3 wickets. And the fast bowlers, they've been difficult on this pitch, as we see Imran Randhawa now coming in to bowl to the seasoned Shoaib Malik. Nicely caught. That is a beautiful shot. That will give a lot of confidence to Shoaib Malik. Outside the off stump, punished. That is where you would not be bowling to somebody like Shoaib Malik. He's too experienced for that. There is a fielder. There is a fielder. Oh, he's taken a beautiful catch to get rid of Shoaib Malik. He was in a hurry. Just lost his wicket. Hello and good evening. Whether it's Southern Punjab or Central Punjab, they don't seem to stop surprising you. This one has gone down to the throat of Ali Majid, and you could sense it in Ali Yunus's tone. How disappointed he is from a batsman like Shoaib Malik. You'd like to watch more of him. He goes back with 67 for 4 on the scoreboard.
New batter in after Shoaib Malik is Ali Aspan. Still require 40 more runs to win this match. But my point is not about winning this. They should win this. I mean, unless something really bad happens. What my thing was that you're in minus 0.63 net run rate. This is the ideal moment to win this quickly and make that net run rate healthy, because even if you win all the games, you might end up with same points with another team. And how many times in a tournament you get an opportunity like this where you have to score only 100? This score is the lowest in the past 3 years in the national T20. Well, can't you see from the type of shots they're playing? They are trying, but they're just not executing it right. Shoaib Malik also, this is not what we used to see of him. Just going after the bowling. They did try a few things. They promoted Qasim Akram up the order, Fizan up the order. It just didn't work for them. Well, I guess now they've gone to plan B. They just want to win this. Forget about trying to win this quickly. Tayyib Tahir is still out there. They shouldn't worry. It's just been a difficult pitch for the batters against seamers especially. That's a beautiful view. Sun setting down. I hope it doesn't set down on central, because the situation is pretty simple, but they're making it difficult for themselves. They've lost 4 wickets. They were in a hurry to score those runs, as you said, just keeping that net run rate in mind. He's also got promotion, Ali Aspan. He's been promoted up the order in place of Irfan Niazi, Amir Yamin, given the opportunity to Ali Aspan. The plan is clear that they want to wrap it up as quickly as possible. But it's not quite that easy of a pitch that you'll come and start hitting hits. Field change. Ali Majid has been pushed back to long on. Nice. Very hesitant approach to play that one. 9 gone, 67 for 4. Crowd is building up. Yesterday we witnessed few people in the stadium. Today also, as the lights come in full flow, we will see more people coming in. Just a huge opportunity for these people of Multan to come and witness these all big stars in front of them. Almost all the superstars of Pakistan domestic cricket are playing in this tournament. If you're a Southern fan, it's not a good news, not a place to be. Central Punjab only required 40 more runs of 66 deliveries. It's up to this man. He's been the man in form. Oh, that kept low. That kept very low. Shoaib Malik trying to clear the long on boundary. He knew it. He hasn't hit it well. Ali Majid just swallowing that. When was the last time when we saw Shoaib Malik play like that? It was just his third, it was just there. 5 minutes ago. That was the last time. Before that. Ali Aspan has taken 4 deliveries, still on 0. Nice looking shot for a single. So while there's nothing much happening, let me ask you, what is your opinion about samosas? Love them. They're on their way. We'll share some and we'll show it to you guys.
Thank you very much. It's all your effort. We know you want them bad. Well, let's see who gets there first, Central Punjab or the samosas. Because if they win, I can't show it to you. You have to have a nice cup of tea with a samosa before the sun sets completely. It's the ideal time. There are certain things you cannot compromise on. Can't eat samosas in the dark. Yeah, you're asking for samosas, but you were there in the ground last evening, walking, looking after your health. That walk, you're spreading it out, and still asking for samosas. It's not a good combination. Show me where it's written. Is samosa is bad for health? It's a nice thing. I'm not saying it's bad, but when you're looking to lose weight and be fit like you, I'm not eating 6. Just 1 is good. the way you're asking. You cannot change my mind. I want them. 1, 2. Can you get 2? The bottom right numbers are irrelevant, 37 or 62. What's relevant is how quickly they get to those 37 runs and the target, 107. Yeah, Ali Asman has been promoted in place of Irfan Niazi and over Amir Yamin. I hope he's got those skills to go big because they're in hurry. And Irfan Niazi would have been suited for this situation. This time they can get 2. Oh, they've decided against it. Well, they're doing their best they can, the Southern young side. They've taken 4 wickets. I think Smeen Goal bowled brilliantly with that new ball, and that's what we have witnessed. That new ball bowling can be very effective. If you can take early wickets, you put pressure on Central, and that's what has happened. Now it's up to Tayyip Tahir to see them home from here on. Kept low on the bounce. 10 overs gone. It's 71 for 4. Early wickets for Smeen Goal. Couple of them, Fazan and Qasim Akram. New pair up the order. Ikhlaq also a bit of nothing short from him. Shoaib Malik also only scoring 6 runs. Every time he pokes at it, he misses. He's trying to edge it. It's happened thrice in front of me. Just that half-hearted attempt to get to the ball. There's no conviction in that front foot, that left leg. I still fail to understand. Looking to score quickly. You've sent somebody, a young batter. In fact, he's a bowler who can bat a little. That's all right, though. But still, I think it's putting pressure on Tayyip Tahir. He's taken 8 deliveries for just 2 runs. We'll have to ask Abdul Razak about these tactics. There you go. You heard that? Tayyip Tahir tells us one. Go for it. That length is very good, actually. He's just testing him, he's inviting him to go at it. If he just pushes his bat a little further more, he'll get the edge. He's trying. And no footwork, just hanging the bat there.
That's not the good way to play, especially on a pitch like this. Yeah, the idea is right from Tayyip Tahir, telling him to take that hesitation away. If you want to play a shot, play it with conviction. Go after it. Four dot balls. That's totally fine. You're not worried about the number of deliveries. The boy wants to take some time, fine. Little chat again. Yeah, I thought they were worried about that net run rate. Central side, they're in a position to win this one. And as you said earlier, they should have done it inside 11 or 12 overs maybe. But this tactic, still a question mark. Oh, Randhawa bumped into Tayyip Tahir, otherwise could have been trouble. Finally a single. Imagine they lose the wicket of Tayyip Tahir. That will put a lot of pressure back on Central Punjab. And that is mainly because of Ali Asfand. I have nothing against him, but the situation, the type of batting he's doing, probably I'm not understanding it. This move of sending him up from in place of Amir Yamin or Irfan Niazi, even Usama Mir, they all can bat well. 11 overs gone, 72 for 4. Just dipping a little, that red worm, very comfortable, but now just at the end slightly starting to tip. It's not a good news for Central Punjab, although the runs required are only 35 or 54 deliveries at 3.89, but it's dipping, I tell you, it's dipping. And if they lose Tayyip Tahir here, that will make things very interesting. As we see Hassan Khan now in. Very good all-round cricketer he is. 30 wickets, best of 2 for 10, and a very good economy too. You have something to say? No, nothing. It's just, I just feel they're dragging it a little bit for no reason. Because what's happening is that on most occasions, Ali Asfand is just offering a dead bat. He's not really pushing it even for that single. Now this. Show some intent and it'll work for you. That's a boundary. Now that's better. Much better. That has put smile on the players of Central Punjab. Early in position and executed it very nicely. Actually, the bowler wasn't even expecting that. Be bold. 14 deliveries for those 7 runs. That's out. No, it's got bat on it. That looked really close, unless it's hit it. No. It didn't hit anything. Yep. Maybe now. No. And almost a run out there. Has he given runs? Yes. That probably came off that edge.
Run out chance. Oh, misfield there. Salman Agha. 12 gone, 78 for 4. ऐसा लग रहा था कि ये सूरज गुरूब होने से पहले ही सेंट्रल पंजाब की टीम पहुंच जाएगी इससे 107 रन के हदफ तक, लेकिन अभी तक उनकी 4 विकेटें जो गिरी हैं उसी के सबब इंतज़ार थोड़ा सा लंबा हो गया है। अलबत्ता 29 रन बनाना है। सेट मैन इनके क्रीज पर हैं तैयब, जो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, और उनके साथ बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली की गई और अली असफंद को भेजा गया। ये दिलचस्प फैसला है। क्योंकि इससे पहले इनको ज्यादा बैटिंग करते हुए हमने देखा नहीं है। न्याजी जो कि स्पेशलिस्ट बैट्समैन है वो नहीं आ पाए। उसामा मीर अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। थोड़ा आगे का सोच रहे हैं क्योंकि ये मौका ऐसा था, बड़ा टारगेट नहीं था कि जिन ऑलराउंडर्स को नहीं बैटिंग मिल सकी उन्हें दी गई है ताकि वो भी कुछ रन्स बना के कॉन्फिडेंस ले सके। और अच्छा है आगे बिजनेस एंड की तरफ जैसे जैसे टूर्नामेंट जा रहा है आपके हर प्लेयर को फॉर्म में होना जरूरी है। लेकिन इस इम्कान को भी हम रद्द नहीं कर सकते कि अली असफंद की बैटिंग के मुतालिक जानते होंगे। कासिम अकरम जो उनकी कप्तानी कर चुके हैं आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में, तो शायद वो उनकी सलाहियतों से वाकिफ़ होंगे, इसलिए उनका ख्याल होगा कि इनकी जो हिटिंग की सलाहियतें हैं, जो ये अनऑर्थोडॉक्स जगहों पर स्ट्रोक खेल सकते हैं, स्पिनर्स को परेशान कर सकते हैं, जैसे रिवर्स स्वीप लगा रहे थे, क्यों ना इनको पहले भेजकर सरप्राइज किया जाए मुखालिफ टीम को। यहाँ पर दूसरा रन लेने की कोशिश है और मिल जाएगी कामयाबी। बहुत तेज दौड़ लगाते हैं तैयब ताहिर। यकीनी 2 रन थे, बहुत जल्दी कॉल कर दी थी और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। पॉजिटिव इंटेंट से खेलते हैं तैयब, जहां भी हो फील्ड में मौजूद हो उनकी वाइब बहुत अच्छी होती है, कैचेस अच्छे लेते हैं। ये देखें क्योंकि बैकफुट पे थे लेकिन बहुत जल्दी टच एंड गो किया और डेंजर एंड पे खुद आए। यहाँ पर इलियास, समीन गुल, अली माजिद, उनका एक एक ओवर बाकी है, तो ज्यादा यहाँ इंतजार कर नहीं सकते हैं। जो कप्तान है आगा सलमान, उनको सोचना होगा क्योंकि ये मैच जो है ये 18वें 19वें ओवर की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर उन्होंने कुछ कर दिखाना है तो अभी लाया जाए अपने स्ट्राइक बॉलर को, वरना ये बाजी उनके हाथ से निकलती जाएगी। तैयब ताहिर को अगर आउट करते हैं कोई भी उनमें से जो इनके स्पेशलिस्ट बॉलर हैं तो ही बात बनेगी। विकेट लेंगे तो कोई इम्कान है जीत का, वरना कंटेन तो वाकई ये रन्स नहीं कर सकते, शुरू से ही नहीं कर सकते थे। विकेट लेने की वजह से ही थोड़ा सा प्रेशर सेंट्रल पंजाब पे डालने में कामयाब हुए हैं और फिर ऑफ स्टंप गेंद मिल गई थी लेकिन मिस किया। ये बाउंड्री ऑप्शन हो सकती थी तैयब ताहिर के लिए। या क्योंकि अगर आप अभी लाते हैं मोहम्मद इलियास को और वो यहाँ पर विकेट हासिल कर लेते हैं या समीन गुल विकेट हासिल कर लेते हैं, तो फिर आपके जो दूसरे कमज़ोर बॉलर हैं वो कमज़ोर बैट्समैनों को ज़्यादा बेहतर बॉलिंग कर सकेंगे क्योंकि उस वक्त दबाव ज़्यादा होगा। अच्छी डिलीवरी इस बार उछलती हुई आई गैर मुतवक्के तौर पर। तैयब ताहिर जो हैं उनको फेंड करना पड़ा आखिर में, मुश्किल।
ये जो दो फास्ट बॉलर आए हैं, वकास और उनके साथ हुनैन शाह, इनके आने के बाद वो बिगड़ी बंद सी गई है सेंट्रल पंजाब की बॉलिंग जो है, उनको सताए हुए था। बॉलिंग का शोभा 81 पर 4। इस पिच पे आज रन्स करना आसान नहीं थे। स्विंग भी हमें अर्ली ऑन देखने को मिला। थोड़ा सा रुक के खेलना पड़ रहा है बैटर्स को, यहाँ पे मोहतात होके खेलना पड़ रहा है। और जब इतना फर्क नजर आए आपको सरफेस पे तो आसान नहीं होता एडजस्ट करना। पिछले मैच में हमने देखा था कि कदरे आसान था रन स्कोरिंग, और यही गुफ्तगू सलमान अली आगा ने भी की थी कि पिचेस समझना ज़रूरी है। सेंट्रल पंजाब ने खुद मुश्किलात अपने लिए बनाई, टॉप ऑर्डर को खास कामयाब नहीं रहा। तैयब ताहिर एक बार फिर जिम्मेदारी लेते हुए नजर आए सेंट्रल पंजाब के लिए। फिर मलिक भी जल्दी आउट हो गए। आमिर यामीन, फहान नियाजी, उसामा मीर, ये तीन वो बैटर्स हैं जिनसे आप रन्स करने की उम्मीद रखते हैं। यहाँ अभी भी ये अपने सरकर्दा बॉलर्स को वापस लाने के मूड में नहीं है और अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। लेफ्ट आर्म स्पिनर हसन खान, जिनके इकलौते ओवर में 6 रन बने थे। सलमान अली आगा, इन्होंने पिछले मैच में 5 विकेटें हासिल की थी, लेकिन आज उन्होंने बॉलिंग की ही नहीं। मुमकिन है कि पूरी तरह फिट ना हूं। ये फिर खुद को इस पिच पर समझ रहे हैं कि गैर मौजू हैं, और जो लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर हैं वो ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। ये हैरत की बात है क्योंकि सलमान अली आगा अच्छी गेंदबाजी करते हैं, मिक्सअप अच्छा करते हैं, फ्लैटर ट्रैजेक्टरी पे भी गेंद करते हैं, और जितना कॉन्फिडेंस उनको मिला था उन्हें ये आज आके करनी चाहिए थी, क्योंकि विकेटें दरकार थी और विकेटें लेने का हुनर वो जानते हैं। आज पहले हाफ में जो स्पिनर ने एक ही विकेट हासिल की थी वो इन्होंने ली थी, अली ने। फिर ये बैटिंग करने के लिए आ गए। ये अच्छा शॉट है, बैकफुट से आया है और 4 रन मिल जाएंगे। ऑफ साइड स्वीपर, बहुत ज्यादा स्क्वायर नहीं थे, लेकिन इतनी अच्छी तरह टाइम किया और बाउंस का इंतजार किया गेंद के, और उसके बाद पूरी तरह इख्तियार में नजर आए। पिछली गेंद को ये बिल्कुल नहीं बख्शते, और जिस तरह के रन यहाँ पे बिल्कुल भी इन्हें मसला नहीं होगा शॉट्स खेलने में, और यहाँ पे अरसलान खान गलती कर बैठे। देखें बहुत जल्दी रीड कर लिया था, बहुत टाइम था, बिल्कुल तहम्मुल से खेला ये शॉट। ऐसा लगता है कि तैयब ताहिर जो हैं ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। बहुत उम्दा इनिंग्स उन्होंने खेली है, 27 गेंदों में 30 रन। ये पहले आज के बैट्समैन हैं जिन्होंने 30 रन बनाए। टॉप स्कोरर हैं इस मैच के, मैन ऑफ द मैच के भी उम्मीदवार बन सकते हैं। तो लो स्कोरिंग सिलसिला है जो अभी जारी है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। सेंट्रल पंजाब और एटीएफ सदर्न पंजाब के दरमियान 88 पर 4। डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी 2022, और ये मुकाबले 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। 9 अक्टूबर को इसका फाइनल होगा और इख्तितामी तकरीब होगी। पाकिस्तान की टीम भी वहां पर पहुंच रही है। इसके अलावा रिवायती हरीफ भारत से उसका मुकाबला होगा। बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका की जो डेफ क्रिकेट टीमें हैं वो भी शरीक होंगी इस DICC चैंपियंस ट्रॉफी में।
19 रन की अब जरूरत है। ऐसे में समीन गुल को बुलाया गया है। ये 3 ओवर पहले भी इनको ला सकते थे। सलमान अली आगा स्ट्राइक बॉलर हैं, 2 विकेटें पहले ही हासिल कर चुके हैं नई गेंद के साथ। अच्छा रोका उमर सिद्दीक ने, गेंद पैड से लगी थी और बहुत बाहर थे विकेटों के, अंपायर अच्छी तरह जानते हैं। कोशिश बहुत की थी समीन गुल ने, माइल कर सके शोजब रजा को। अच्छी बॉलिंग करते हैं, नए गेंद से भी अच्छा स्विंग मिल रहा था। अभी भी कोशिश यही है कि विकेटों में रखा, आगे गेंद कराई, क्योंकि तैयब ताहिर पीछे नहीं बख्शते। तैयब ताहिर जो हैं अब सब उनके बारे में जान चुके हैं। पिछले 2-3 सीजन से वो नजर आ रहे हैं कि जो उनके रन्स बनाने का अंदाज है वो बस हम कह सकते हैं पस कदम ही होते हैं जब ये शॉट खेलते हैं। इस बार सामने खेल दिया। तो जब इस तरह का बैट्समैन जो बैकफुट से ही रन्स बनाता हो तो फिर आपने समझते हैं कि ज्यादातर गेंदें जो फुल लेंथ ही आनी चाहिए, उनके पैड्स पर अटैक किया जाए आगे गेंद को गिराकर। तो जहाँ उन्हें रूम मिलता है वो वहाँ पे एक्सप्लॉइट जरूर करते हैं, और इनकी कामयाबी का राज भी है कि एक तो बैकफुट पे खेलते हैं, अगर फ्रंट फुट की गेंद हो भी तो बहुत ज़्यादा कमिट नहीं होते फ्रंट फुट पे, गेंद को आने देते हैं करीब, और इसलिए इस तरह की विकेटों पे इन्हें हमेशा रन करते हुए नजर आएंगे ये, क्योंकि गेंद को अपने करीब आने देते हैं। शॉट्स इनके पास रेंज ज़रूर है शॉट्स की, लेकिन थोड़ा घबराते हैं जब अंदर गेंद आता है आगे। यहाँ और जिस तरह आप कह रही हैं कि गेंद को आने देते हैं क्योंकि देर से खेलते हैं, इससे स्विंग को भी ये मैनेज कर जाते हैं। सेंट्रल पंजाब जो है आज बिल्कुल हम कदम हो जाएगी। अगर ये 2 पॉइंट्स उसको मिल गए तो उनकी तीसरी कामयाबी होगी। सदर्न पंजाब ने भी 3 ही मैचेस जीते हैं, लेकिन दायरे के 6ठे नंबर पर ही अभी इक्तिफा करना पड़ेगा। आज की कामयाबी के बाद भी रन रेट इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ है कि उसको सुधारने के लिए अभी पापड़ बेलना होंगे आगे चल के भी। कोशिश इन्होंने आज जरूर की थी रन रेट बेहतर करे, लेकिन चीजें उनके मुताबिक गई नहीं। तो अगर ये 10 ओवर्स में आज हदफ हासिल कर लेते तो फिर इनकी पोजीशन 5वीं हो जाती। उस सूरत में ये टीएफ सदर्न पंजाब को पीछे छोड़ सकते थे, लेकिन अब दौड़ जो है वो बहुत तेज हो गई है सेमीफाइनल की तरफ, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की टीम वो तकरीबन सेमीफाइनल में है, उसका एक कदम। और सिंध ने रात कामयाबी हासिल की। सिंध की टीम अब दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। अगला मैच भी बहुत तगड़ा होगा, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का ही सामना है। सर अच्छी गेंद थी, पीछे हटे, शायद पहले से तवक्को कर रहे थे, बैक अवे किया अली ने, लेकिन फॉलो करते चले गए तैयब। अच्छी याद दहानी कराई समीन गुल ने, पेस इनके पास मौजूद है, स्विंग भी करते हैं, अच्छा फॉलो किया। अली असफन पूरी कोशिश में है कि फायदा उठा सके जो इन्हें बारी मिली है। देखें अच्छा बाउंसर था, वेल डायरेक्टेड बाउंसर था समीन गुल का। स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, 21 गेंदों पे सिर्फ 9 रन बनाने में कामयाब हुए। क्या यहाँ बाउंसर के बाद यॉर्कर का इस्तेमाल होगा? बोल्ड या एलबीडब्ल्यू करने के लिए कोशिश होंगे। सेटअप कर लिया है, इसकी नौबत आने नहीं दी क्योंकि स्टंप से ये चलते हुए तकरीबन अगली पिच पर पहुंच गए थे। और क्या यहाँ पहुंच सकेंगे और रन आउट हो जाएंगे? ये देखना होगा टीवी अंपायर को। काफी वाइड भागते हुए गए थे और थोड़ी देर जरूर लगी। बैट्समैन मुतमईन नजर आते हैं। तैयब ताहिर ने बहुत ज्यादा पुश किया था अली को दूसरे रन के लिए, वो ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आए थे और करीबी मामला लग रहा है ये। यहाँ ये तो बहुत हद से भी ज्यादा करीबी लग रहा है। देखिए अभी तक जो बेल है वो ग्रूव से निकली नहीं, उसका उखड़ना बहुत जरूरी है, उसी सूरत में आउट दिया जा सकता है।
ये फ्रेम जो है यहाँ कह सकते हैं कि ये बाहर हैं अपनी क्रीज से। थोड़ी सी कमज़ोर थ्रो की थी विकेट कीपर ने और उनको ये मिली भी कमज़ोर थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बेल है वो निकल चुकी है रखने से और यहाँ पर फैसला ये अली के खिलाफ आ जाएगा। कोशिश इनकी यही थी तैयब ताहिर की कि स्ट्राइक अपने पास रखते, इसलिए पुश किया। आखिरी गेंद थी ओवर की। अली असफन को अब इंतजार है कि थर्ड एम्पायर का क्या डिसीजन आता है। जी हाँ, ये हुक्म आ गया है टीवी अंपायर वलीद याकूब का कि आउट है बैट्समैन। साहब दूर से भागते हुए आए थे दूसरे रन के लिए, तो 6 रन बनाए अली असफन ने। 5वां नुकसान उठाना पड़ा सेंट्रल पंजाब को 89 के स्कोर पर। इरफान न्याजी जो हैं पहुंचे हैं इस मैच को ख़त्म करने के लिए। ये फिनिशर हैं। 128 रन्स इन्होंने बनाए हुए हैं। इनके रन्स इतने कभी भी नज़र नहीं आएंगे जिन नंबर्स पर ये बैटिंग करते हैं। इनका स्ट्राइक रेट जो है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि जिस रोल में इनको इस्तेमाल किया जाना है आगे चलकर भी। और इनके यहाँ रन्स नजर आएंगे और बाउंड्रीज भी। फिर थोड़ी सी विड्थ मिली और पीछे हट के और ज्यादा रूम क्रिएट कर लिया था तैयब ताहिर ने, जो दूसरों से बहुत बाला लगे हैं बैटिंग के जिम्न में इस पूरे मैच में। यही वजह थी कि स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, क्योंकि अली असफन क्लियरली स्ट्रगल कर रहे थे। यहाँ पे आप जब भी गेंद करेंगे पूरा दिन तैयब ताहिर आपको ये चौके मारते रहेंगे। बहुत इनको कंट्रोल हासिल है इस शॉट पे। पाकिस्तान में माजी में कई बैट्समैन बड़ी महारत से कट शॉट खेला करते थे, स्क्वायर कट। एजाज अहमद, जावेद मियांदाद, ये उन्हीं की तरह ही बहुत जोरदार शॉट खेलते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट, फास्ट बॉलर और स्पिनर को। ये देखिए स्कूप करने की कोशिश की और क्योंकि अगली पिच पर चले गए थे और फिर वहीं से भागते हुए कुछ इजाफी फासला भी तय करना पड़ा। तो विकेट कीपर एक लम्हे के लिए दूसरे एंड पर थ्रो करने वाले थे, फिर ख्याल आया कि इस एंड पर शिकार का मौका है। झिझक भी नजर आई थी दूसरे रन के लिए। दोनों तैयब ताहिर और अली रुके थे, इसकी वजह से ताखील हुई। सदर्न पंजाब की टीम इस एतबार से हम कह सकते हैं कि वो कुछ मुतमईन होगी कि उन्होंने आखिर में ये रन्स आसानी से बनने नहीं दिए और उन्होंने फाइट किया है। जो फाइटिंग स्पिरिट है वो 107 पर आउट होने के बाद भी वो ख़त्म नहीं हुई। तो यही हम कह सकते हैं आज का सबसे बड़ा पॉजिटिव है सलमान अली आगा और उनके खिलाड़ियों के लिए। ये अच्छा शॉट है और ये चौका भी है, बैकफुट से खेला, सही वक्त पर अपने बल्ले का फेस ओपन किया। और पहले तैयब ताहिर ने कट शॉट लगाया था जोरदार और इरफान ने इस बार बड़ी नजाकत से खेला। दूसरा चौका इस ओवर का। पिछला कदम आउटसाइड ऑफ स्टंप लेके गए थे, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे इन्होंने अपना बैट का फेस खोला। कमाल टाइमिंग थी इस बार और प्लेसमेंट भी। ये ज्यादा ड्राइव था जो किया इरफान न्याजी ने। शॉर्ट गेंद कर सकते हैं, यहाँ पिछले मैच में बाउंसर पर आउट हुए थे इरफान न्याजी। सेंट्रल पंजाब
कि 100 रन मुकम्मल। ATF सदर्न पंजाब के पास रिसोर्सेज ज़रूर हैं, लेकिन एक बार फिर मैं कहूँगी कि आज शॉर्ट सिलेक्शन ने बहुत उन्हें लेट डाउन किया है। नाम भी मौजूद हैं, एक ओपनिंग पेयर भी अच्छा मिल गया था, फिर मकसूद की भी वापसी हुई। शायद कमी जो है वो एक तेज बॉलर की है। इनके पास जो आउटराइट फास्ट बॉलर है सदर्न पंजाब के पास वो नहीं है। मीडियम पेसर्स हैं, ये फास्ट मीडियम बॉलर हैं। बहुत करीब से गई तैयब ताहिर के दस्ताने के। शायद जो बाउंसर है ये मुख्तलिफ बैट्समैन के खिलाफ कर दिया इलियास से। इरफान को करना चाहिए था 100 पर 5। That's what is coming up. Khyber Pakhtunkhwa taking on Sindh, match number 24. Just a match not to be missed. Two table toppers up against each other. That's going to be a cracker of a game, especially after the century of Shajil Khan. Really looking forward to see him bat again. 7 runs for Central Punjab. They can do it in singles because it seems like that they're not in a hurry. They seemed to be in a hurry when they started off. One felt they were going to go for it and get big improvement into their net run rate. All of wickets, especially those two in quick succession, Qasim Akram and Akhlaq, has really pegged them back. Shoaib Malik also didn't last very long. I think at this stage they will just take the victory and whatever comes with it. Change in field. Square leg and fine leg being moved towards square. Tayyib Tahir goes straight, nice and handsome. That will earn him a boundary. Muscle down the ground. Just cleared that front leg and look at that back lift. Not a lot, but that punch with the strong forearms almost flat batted it. Randhawa had to duck for cover. Strong man. What do you think? Is he a candidate to get a place in Pakistan side? The type of form he is in. That's a good one because he's performed as an opener at number 3, at number 4, and Pakistan is looking for sort of player that he is ideally suited for those numbers. Tayyib Tahir, very talented, is a very good fielder also. He's got a strong arm. I think definitely one to be look out for. Scores the level. Yeah, he's a good player of spin. There's something that Pakistan is lacking in the middle order. He's been very consistent in this tournament under different conditions, different circumstances. Playing for a team who wasn't doing well, he really stood out. Oh, that has to be out. That has to be out. Yes, given out. Kept low from Randhawa. There was no chance that Niazi were surviving this. Although the scores are level, but they have just lost another wicket. One too many, 7th. This wicket has fooled everybody. That's stayed low. Skiddy Randhawa. He's not a very tall man. Doesn't get a lot of bounce. And Niazi trapped on the crease. Another low score for the big hitting man. Central Punjab on the verge. 106 for 6. They tried well, this young side of ATF Southern Punjab. They've at least, done something. They've taken 6 wickets. They fought well with the ball. The batting approach had left a lot of question marks.
but you can't fault them for their effort in the field and with the ball. They push Central Punjab all the way with very little on the board. Amir Yamin is a very capable batter. That strike rate of 140. Yep, that will do. That is a victory for Central Punjab. Side 16.5 overs. They've chased down this low total of ADF Southern Punjab. They scored 106 rather. And Central Punjab have chased down that inside 17 overs. Well played, Tayyib Tahir. Thoroughly deserved. And now this victory has really pushed Southern Punjab probably to the bottom of the table. These Central Punjab making a comeback. At one stage they looked down and out in this championship, but now they've got 3 victories under their belt. The table has really tightened up. Today their performance was very clinical. Skipper Qasim Akram made a good decision at the toss when he decided to have a ball first, and then execution of the plans was good. Some indifferent batting from ATF Southern Punjab helped their cause, but it's not their fault. They were relentless throughout. A bit of a stutter with the run chase, but in the end they got up to the target inside 17 overs. Yeah, congratulations to Central Punjab. They won this game by 4 wickets. Qasim Akram must be a very happy captain. 3 victories, consecutive victories for him. That has definitely made them come back in this tournament. Although they're running short of time because we're getting to the back end of the tournament, and every team needs to register wins here if they want to progress in this championship. Well, in pursuit of 107, Qasim Akram decided that he will open. Majid wasn't at his accurate best. Plenty of room outside the off stump. Punchy drive there from Faizan, but sea movement from Samin Gul took care of him. Akhlaq came out all guns blazing. He came out with intent. This one he hit it right out of the screws. This one not quite, but power play made sure that he cleared the fence, and then this was one too many. Qasim Akram followed soon after. Tayyib Tahir's knock was crucial. He held the innings together. Ali Majid once again straying. Very quick on his feet. Tayyib Tahir, Shoaib Malik. Didn't last very long. After that, there was a scare at this stage, especially the loss of wickets. Strange decision to send Ali Aswan in by Qasim Akram. Tayyib Tahir made sure that he kept the scoreboard moving. This was sloppy. Too much traffic. Ali Aswan ran into it and in the end was just short. Square cut is one of Tayyib Tahir's favorite strokes. Nicely timed by Niazi. This is bludgeoned down the ground. Tayyib Tahir, full range of strokes. Niazi played back to slightly fuller delivery. And that was the winning moment. Amir Yamin fittingly dealing the final blow to his former team, ATF Southern Punjab. 106 for Southern Punjab. Zain scored 25. Central Punjab winning the toss and giving Southern Punjab the go first. Amir Yamin bowled really well with the new ball. 3 wickets to him. Waqas also getting 3 wickets. And Tayyib Tahir made sure that they chased down this total easily. 110 they scored. Imran taking 2. Samin also taking 2. And in the end, Central Punjab winning it by 4 wickets.
That will be an interesting reading here. The points table, look at that. It is so tight. Central Punjab still at the bottom. They had a chance to recover some of that minus 3.6 net run rate. But if they keep winning games, probably that won't even come to equation. But Southern Punjab, Balochistan are now looking over their shoulders. Northern with a game in hand, so is Khyber Pakhtunkhwa. Hello and welcome to the post-match presentation of match 23 between Central and AT of Southern Punjab. Low-scoring game and yeah, it was slow, but things got really difficult for both sides. Batting wasn't really easy as it seemed. Eventually, it was Central Punjab who won this match by 4 wickets. Before we call upon the Kingdom Valley player of the match, I'll welcome Mr. Mohammad Oman Ashraf, sales executive from Kingdom Valley. Thank you for joining us. And now to call on the Kingdom Valley player of the match, with his 5 boundaries and a 6 and a 41 run of 34-run inning, Tayyib Tahir. He'll receive the trophy and the player of the match cash award of 25,000 from Mr. Noman Ashraf. In a low-scoring game, 41 valuable runs is almost half the score of the team. He'll also receive the trophy from him. We'll have a quick word with Tayyib as well.
तैयब, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी अच्छी चल रही है बैट के साथ, लोड ज़्यादा आया हुआ है आप पे क्योंकि सेंट्रल पंजाब में शायद आप ढूंढ रहे हैं कोई पार्टनर जो बैटिंग में आपका साथ दे। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, विकेट आज की तो इजी नहीं थी, लेकिन यह है कि शोबे जब भी आते हैं अंदर तो मुझे ये लगता है कि अब इनके साथ पार्टनरशिप लगेगी। उसके अलावा कोई अभी इस तरह स्टेक इन नहीं कर रहा, तो बाकी यह है कि इट्स पार्ट ऑफ गेम। तो कोई भी नहीं चाहता कि उसका कोई मतलब जल्दी आउट हो या कोई बैड परफॉर्मेंस हो, तो सब अपनी अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं। लो स्कोरिंग गेम था, ऐसे टोटल चेस करने के लिए मौका था आपके पास एज ए टीम अपना नेट रन रेट अच्छा करें, क्या यही वजह थी कि शुरू में लोग आके मारने की कोशिश कर रहे थे? हाँ जी, सबसे पहले यही प्लान था हमारा। कोच ने बोला कि हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी मतलब चेस करेंगे 10-12 ओवर्स में। अगर विकेट्स गिरती है तो फिर हम थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे, तो वैसे ही हमने किया। इस पिच के बारे में, क्योंकि आपने बनाए 41 रन, क्या कैसा देखा, क्या मुश्किलात थी जिनको टैकल करना पड़ रहा था बाहर? डबल पेस विकेट थी, इस पे यू नेवर नो, बॉल लो रह रहा है, एकदम चढ़ा ऊपर, तो वो थोड़ा हार्ड था खेलने के लिए। और मैं भी ये सोच रहा था कि मुझे बीच में रहना है, तो इसलिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, अदरवाइज इट्स हार्ड। चलिए, मजा आया आपकी इनिंग्स देख के, वेल प्लेड। तैयब ताहिर, आज के प्लेयर ऑफ द मैच। नाउ विल कॉल अपॉन द कैप्टन ऑफ ATF सदर्न पंजाब, सलमान अली आका। सलमान, पिच डिफिकल्ट थी अभी तैयब ताहिर कह रहे थे, लेकिन फिर भी आप शायद एज कैप्टन ज़्यादा चाहेंगे अपनी टीम से 107-106 रन नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल 107-6 रन तो किसी भी विकेट पे जो है वो ऑब्वियसली इनफ नहीं होते, लेकिन ये है कि हम विकेट को उस तरह असेस नहीं कर पाए क्योंकि विकेट मेरे ख्याल से 130-140 वाला था। अगर 130-140 होता तो उनको भी मुश्किल होती। किस तरफ देख रहे हैं टीम को जाते हुए, क्योंकि 5th पोजीशन है और अब मैचेस शायद 2 बचे हैं और ऑब्वियसली अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो नहीं सकता, क्या प्लानिंग ऐसी है जो आप लाना चाहेंगे अगले मैचेस में? टू बी ऑनेस्ट हमारी टीम ने क्रिकेट जो है वो अच्छी खेली है, थोड़ा इन आउट रहे हैं मतलब की मोमेंट्स में आकर हम लोगों ने जो लूज़ किए हैं मैचेस, लेकिन ये है कि अभी भी टीम का मोरल तो हमारा हाई है। 2 मैचेस हम 2 मैच जीते हैं तो हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। अब डू एंड डाई वाला सिस्टम है, कोशिश यही करेंगे कि अपना मैक्सिमम दे इसमें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये दोनों मैचेस आपको मिल जाएं। थैंक यू वेरी मच। सलमान, कैप्टन ऑफ ATF सदर्न पंजाब। अब मैं बुलाऊंगा कासिम अकरम को, कासिम द कैप्टन ऑफ सेंट्रल पंजाब। कासिम, कोशिश पूरी की थी आप लोगों ने इंटरेस्टिंग बनाने की मैच को चेज में, इसी से स्टार्ट करता हूँ। बैटिंग ऑर्डर थोड़ा चेंज किया आगे पीछे नेट रन रेट को बेहतर करने के लिए? जी बिल्कुल ऐसे ही था, हमारे ध्यान में था कि हम 13-14 ओवर में मैच फिनिश करें, बट उनके बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, विकेट भी थोड़ा डिफिकल्ट था। ओवरऑल आप इस मैच को देखते हैं, इसमें से क्या पॉजिटिव्स लेकर जाएंगे आप, क्योंकि लो स्कोरिंग में ज़्यादा टेस्ट नहीं होते लेकिन फिर भी 6 विकेट्स गिर गए? जी देखें, हमारे बॉलिंग यूनिट ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और उसके बाद तैयब भाई ने जैसे खेला है आउटस्टैंडिंग। ओवरऑल अब आपके पास ऑब्वियसली 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, नेट रन रेट का शायद मौका और आगे मिल जाए, लेकिन ये बाकी मैचेस जीतने हैं, तो कुछ ऐसे एरियाज जो आप अभी और कहते हैं कि मुझे चाहिए अपने प्लेयर से? जी बिल्कुल, एज अ टीम हमें करना पड़ेगा बैटिंग में, टॉप ऑर्डर्स में, और मिडल में अच्छा जा रहा है, टॉप ऑर्डर्स में और अच्छा करना पड़ेगा। और हमारी जैसे बॉलिंग है, इस तरह की बॉलिंग काफ़ी अच्छी है हमारी बॉलिंग। चलिए, इस जीत के साथ एटलीस्ट टूर्नामेंट में आए हैं आप लोग। गुड लक फॉर द नेक्स्ट मैच। थैंक यू। Qasim Akram, the captain of Central Punjab, and that concludes the presentation. Thank you very much, Sikandar. And this is what's coming up next. Khyber Pakhtunkhwa versus Sindh, another mouth-watering contest. It should promise to be an exciting game. It's coming from Multan Cricket Stadium in a short while. At this point, we'll just take a short break and we'll come back with live action in just about 20 minutes.